Unmute. Okay. Share screen. Okay. Hair basically is more complex than it appears on the surface. बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं हेयर के पीछे, लेकिन nowadays hair is one of the biggest industry. Homeopaths are converting into that cosmetology part. सब 1 लाख का 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट परचेस कर रहे हैं, they are working on that. लेकिन होम्योपैथी itself works excellently, तो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं. No need to introduce that instrument part in your clinic. वो तो सलून वाले भी करने वाले हैं. They are also doing such thing. So as a doctor, you can do something better than that things. We all know that what is the role of hair? We all know that is important for female as well as male. Gender identification के लिए that is also required, and for female के लिए जितना भी important है, as well as male के लिए. In your clinic you have seen female तो आती ही है, 10 में से 7 female will come to you with hair falling, और at the age of 70 उसकी chief complaint होगी कि sir hair falling हो रहा है. Have you seen such patients? So now we have to understand कि at this age from kids parents आके बोलेंगे कि sir 5 साल का बच्चा है और उसको hair falling हो रहा है. होता है ऐसा? So that we have to understand कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. So hair is that much important. That is not a vital organ. Still that is very important. Heart attack आएगा, पेशेंट कार्डियक की मेडिसिन लेने आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली पेशेंट विल टेल यू कि सर मुझे हेयर फॉलिंग बहुत हो रहा है. Now the origin, हेयर का origin कहाँ होता है? These are basic numbers basically. लेकिन for your knowledge, by week 22, that is approximately a fifth and half month, जहाँ पे हेयर का beginning होता है, hair follicles शुरू होते हैं. At this age, this stage of life, there are almost 5 millions of hair follicles. These are simple numbers. That is for knowledge. वो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है. That will not helpful in your practice. But as a trichologist, if you are going to treat hair, so आपको पता होना चाहिए इसका origin कहाँ पे हो रहा है. And that 5 million hair follicles are the maximum number that patient or the child or the fetus have in their whole life. उसके बाद numbers of hair follicle नहीं बढ़ेंगे और कम भी नहीं होंगे. तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम बड़े होते हैं तो हेयर की डेंसिटी कम हो जाती है? If hair falling normal is not there, due to the reason is scalp is expanding. Gradually scalp is expanding, उसकी skin ज्यादा हो रही है. Due to that we feel that our scalp expands. Due to that we feel that कि बाल कम हो रहे हैं. If hair falling is not there, I am talking about normal physiology. This is the largest number of hair follicle human will ever have, since we do not generate new hair follicle anytime during the course of life. This is the main thing. जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा है तो tell them कि नया hair follicle generate नहीं होगा. This is the bitter truth. आपके पास मेल पैटर्न बालनेस लेके पेशेंट आ रहा है या एलोपेशिया एरियाटा लेके आ रहा है, तो उसमें हेयर ग्रोथ क्यों हो गए, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. लेकिन नया हेयर फॉल जनरेट नहीं हो. कोई ऐसा बोले कि मैं आपके स्कैल्प के अंदर नया हेयर फॉल जनरेट करूंगा, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल. Are with me?
Now let's understand the basic structure of hair. You see, this one is hair follicle, and this one is hair shaft. Hair is divided into two parts: hair shaft and hair follicle. Follicle is remain inside the skin, that is in dermis level and epidermis. We are seeing outside, that is the shaft. तो बाहर से हम देखते हैं which is non living part. आप सो गए हो और someone is touching your hair तो आपको feel नहीं होगा. Someone is pulling your hair तो आपको feel होगा. That is उसका. लेकिन externally कहीं पे shaft पे touch करोगे, if your vision, if your senses are not working तो आपको feel नहीं होगा. That is the dead part. One more structure that is important, that is sebaceous gland. बहुत culprit है, which creates seborrheic dermatitis, which create dandruff. उसके लिए sebaceous gland is very much culprit. So there is no medication in allopathy salve for seborrheic dermatitis. आप प्रैक्टिस करते हो, you know कि डोकेनाजोल अप्लाई करते हैं, ये करते हैं, जिंक होता है, लेकिन that is temporary. Permanent, there is no solution for sebaceous secretion. You are the new generation homeopath. If you want to do research on that, आप ऐसे medicine ढूंढो जो sebaceous gland के ऊपर affection. Anyone know any remedy having efficacy on sebaceous gland? Any homeopathic medicine? Online people, you also. Acid flow having no affinity for phosphorus for hair falling, not affinity for sebaceous gland. Natrum. Aurum metallicum. Okay. In which book it is mentioned? Anyone of you know Aurum metallicum? Or that you mentioned which medicine? जेएच क्लार्क में आई थिंक भाटक या क्लार्क में थी, लिखा था कि ये ना यंग एज में हेयर फॉलिंग हो रहा है और सीबेसियस ग्लैंड पे इसका अफेक्शन ज्यादा है. और मेटालिकम. Okay, that is new for me. लेकिन one single medicine that I know, that is soranum. That is even written in boric. Soranum have an affinity on sebaceous gland, guys. Soranum का secretion कैसा होता है? Anyone knows? The perspiration, the phase, the secretion of soranum. Anyone? Sticky and greasy, oily, greasy phase. That is soranum. Soranum have affinity on sebaceous gland as well as perspiratory gland. Both के ऊपर affinity है. Even that is the specific remedy for dandruff. We can think of this remedy. Graphitis, वो sebaceous gland पे affinity है, that I don't know. लेकिन for dandruff we can also think of that. Dandruff के लिए graphitis is also one of the good remedies. That we are going to discuss about the dandruff. लेकिन the affinity on sebaceous gland. One tiny muscle is there. That is called as, कौन सा muscle anyone know? This erectile papilla. उसका भी एक role है that we are going to discuss. This is the basic structure of hair. Two parts as I discussed. कि hair follicle है and shaft है. Hair follicle which reside in the skin, skin के नीचे होता है, and shaft which is visible outside, जो हम बाहर से देखते हैं. Now hair follicle, as we discussed, जो inner part है that is hair follicle, और hair follicle के अंदर it is the small tiny part that is called as dermal papilla or hair root. This one is very much important part. Hair root. One type of hair fall is there कि जहाँ पे आपको hair root और bulb दिखेंगे. That we are going to discuss later. That is the indication of some type of hair falling that we are going to discuss. This is the living part of hair. जहाँ पे arteries और veins और capillaries होते हैं.
The papillae, which contain capillaries or tiny blood vessels that nourish the cell and living part of the hair. The most important part of that bulb is that is also called as bulb, and the important part is that is dividing every 23 or 72 hours. हर 2 दिन में या 3 दिन में that is constantly dividing. That is one of the fastest dividing cell of the body. One of the fastest. कैंसर के बाद एलोपेशिया क्यों होता है? Anyone knows? हाँ, कीमोथेरेपी की वजह से क्यों होता है? That is due to chemotherapy. Again, what is the reason? कैंसर में सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो कीमो देते हैं तो सर्कुलेशन कम होता है. Yes, that is the reason that we are also going to discuss. This is why I am pointing out right now. These are the helpful to differentiate the alopecia parts, alopecia type of alopecias. That is why faster than any other cell of the body. So बात निकली है तो let me explain you कि that is called as anagen effluvium. Let me discuss later. वो anagen catagen explain. Hair shaft, as we discussed, the outer part, इसमें 3 layers है. The most outer part is cuticle. That is the outer part. That is the protective part. That is made up of keratin. और जो आपके सलून में ट्रीटमेंट करते हैं, that is keratin treatment. और they are working on this. That is keratin. वो लोग external keratin apply करते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं. वो जलाते क्यों है? To stick the keratin on the hair. वो hair के ऊपर stick होता है. That is why. उसकी वजह से your hair gets straight और smooth होता है. The main part, that is cortex, that is the middle part of the hair, that contains melanin. So you are the new generation homeopath. If you want to do research to find out the remedy which work on the cortex, why? That is the melanin. तो बाल का जो कलर आपको इंटरनली चेंज करना है, तो you have to work on this. मेरे माइंड में अभी भी कोई मेडिसिन नहीं है. आई एम स्टिल सर्चिंग व्हिच हेल्प टू चेंज द कलर. बच्चा के बर्थ के बाद जो उसके हेयर ग्रे हो रहे हैं, ग्रे हेयर के साथ, ग्रे मतलब कलर ग्रे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाइट, ग्रे और जो नॉट अ प्रॉपर ब्लैक कलर. तो द रीजन इज दिस मैनी. तो हमें ऐसी मेडिसिन ढूंढनी है एज अ न्यू जनरेशन होम्योपैथ व्हिच वर्क्स ऑन दिस पार्ट एंड व्हिच कैन चेंज द कलर. Still in science, there is no remedy which can change the color of hair. अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया. If you are more in research part, try to find out such medicine. And the most inner part, that is medulla, that is the core of hair, that might be present, that might not be present. उसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है. Cortex is main part which contains melanin. As we discussed, the hair follicle is shaft. The hair shaft is made up of hard protein. It is called as keratin. 3 layers are there. Protein is actually dead, as we discussed. So hair that you see is not living structure. The inner layer, that is medulla. The second layer is the cortex, and the outer layer is cuticle. Now, what is it? ये क्या है? Anyone? Yeah, that is goosebump. What is the reason of goosebump? Goosebump क्यों? क्यों? Why? It is a physiology, लेकिन क्यों? Shock situation, sympathetic activity. If yes, adrenaline rush, okay. Any situation that excites you, that can be emotional, that can be physical, that can be mental, whatever, that affects you, and due to that hair gets straight, and that is called as goosebump. और उसके पीछे the main part is that muscle that we discussed, that is erector pili.
what is happening when you get excited at that time, the erector papillae muscle get contracted. And due to that, hair gets straight. That is called as goosebump. Any emotional situation, any external fear, whatever it may be the cause, वो emotional भी हो सकता है, even sexual arousal भी हो सकता है, so joy, sadness, anything that creates goosebump. This is the basic physiology. Even when we are talking about hair, हमें पता होना चाहिए. This is a very tiny. Any other tiny muscle you know on the body? Having a long name on face. छोटा सा muscle, any muscle in the body. The smallest muscle, except this. That is inside our ear. Okay. One muscle I know जो बहुत छोटा है, that is remain over here, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है. Levator labia superialis elegans. Know it? वो anatomy में हम पढ़ते थे. Sebaceous gland is a vital because it produces sebum. जब भी आपके पास dandruff वाले पेशेंट आएंगे या seborrheic dermatitis वाले पेशेंट आएंगे, तो how you describe, how you explain those patients? कैसे explain करते हो? Anyone? जो मेरे पास बैठते हैं देख लो. Sebaceous gland का secretion जितने भी dandruff वाले पेशेंट आएंगे, explain them. क्योंकि पेशेंट आपके पास इसलिए कंटिन्यू रहेगा if they get confidence in you. तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए. Explain everything to the patient. वो जो चीज से सफर हो रहा है वो सब एक्सप्लेन करो. Patient is suffering from appendicitis, explain it. Show it to him कि आपको ये हो रहा है उसकी वजह से पी. Show your knowledge to your patient. तो उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए. तो sebaceous gland वाले या dandruff वाले जितने भी पेशेंट आते हैं, seborrheic dermatitis वाले, explain them. The role of sebaceous gland is to moisturize your scalp or your skin. लेकिन जब भी sebaceous gland का secretion is excessive, that remains on the scalp and that come to contact with the atmosphere, it becomes dry. And due to that creates skin. So that is a simple physiology. ये कोई disease नहीं है, लेकिन वो जो excessive secretion हो रहा है उसको हमें treat करना. एलोपैथी के पास बहुत सारी local remedies है, लेकिन there is no permanent solution for seborrheic dermatitis or dandruff. We have excellent remedy that we are going to discuss. Now, most important and most favorite part of life, that is hair cycle. If you are a trichologist, if you are treating hair, you must know hair cycle. And you know कि मैं मेरे each and every patient को explain करता हूँ कि आपका hair falling क्यों होता है from this hair cycle. Hair on the scalp grows about 3 to 4 millimeter a day. That is about to 6 inch. 6 inch मतलब that is 15 centimeter approximately per year. बाल इतने बढ़ते हैं. If you have more growth और उसका फेस ज्यादा है, तो that can be like this. लेकिन पेशेंट आपको आके बोलता है कि सर मेरे इतने ही बाल बढ़े 1 साल में, तो एक्सप्लेन दैट इज नॉर्मल. इतने ही बढ़ते हैं. फीमेल आके मेरी चोटी इतनी बड़ी है सर, इतनी, तो दैट इज नॉर्मल. दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी. इतनी ही बढ़ेगी, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो. Unlike other mammals, human hair growth and shading is random, not seasonal or cyclical. लेकिन as we all know, due to Sankaran sir, we know about the mammal. तो हमारे पास ऐसे mammal आएंगे, snake remedies and all the things, especially leg and all the things, कि जहाँ पे we can see कि monsoon में hair falling होता है. That is very good. आते हैं patient कि सर मेरे monsoon में hair falling होता है. In human, that is not practically possible. लेकिन practically we are seeing in our practice कि भी ऐसा होता है. तो weather is affecting. तो उसकी वजह से we have no remedy. We can think of Dalkamara, we can think of Natransal. जो बेज वाले एटमॉस्फेयर में hair falling होता है. Anything that affects in damp weather.
we can think of these two main remedies. At any given time, the random number of hair will be in 1 or 3 stages of growth and shading that we are going to discuss. Consequence stage hair. This is most important part to learn about hair fall. There are 3 parts in hair growth cycle. First is anagen phase, second is catagen phase, and third is telogen phase. Anagen is an active growth phase कि जिसके अंदर बाल का ग्रोथ होता है, जिसके अंदर बाल लंबे होते हैं. The second phase, that is catagen phase, there is a transition phase. Anagen में से बाल catagen के अंदर कन्वर्ट होता है, तो that is the transition phase कि जिसके अंदर बाल telogen phase के अंदर आते हैं. So ये stage is not that much important to learn. Another most important stage, that is telogen phase कि जिसके अंदर hair is getting detached from the root और वो गिर जाता है. तो if as you are new generation of your friend, जो if you are working to grow more hair, तो आपको क्या करना है? You have to work on anagen phase. जो anagen phase जितना लंबा होगा, इतने बाल लंबे होंगे. The normal period is 3 to 5 years. I'm talking about years. एक बाल anagen phase के अंदर 3 to 5 years तक रहता है. That can be very percent of us. This is the normal ratio. And another thing, that is telogen phase. If you want to reduce the hair falling, you have to work on telogen phase. कि telogen phase जितना कम हो सके उतना आप hair falling कम कर सकते. Shortest telogen phase causes reducing the hair falling. Are you getting my point? That phase is remain 2 to 4 months. वो 2 to 4 months तक चले. तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा, वो ऐसा बोलेगा कि सर मुझे 4 महीने पहले टाइफाइड हुआ या मेरी डिलीवरी हुई 4 महीने पहले और उसके बाद आई गॉट हेयर फॉल, लेकिन आफ्टर 3 or 4 months, दिस इज द पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसमें इस प्रकार का हेयर फॉलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज telogen phase. Till now, these 3 phases are clear: anagen phase, catagen phase, and telogen phase. So work on that part. You will have good result if you have medicine for this part, anagen phase. और इसके ऊपर से एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपके आईब्रोज के और आईलैशेस के बाल लंबे क्यों नहीं होते? आपके स्काल्प के बाल बड़े हो रहे हैं, लेकिन आईब्रोज और आईलैशेस के बाल आर नॉट गेटिंग दैट मच लॉन्ग. क्यों? What is the reason behind that? Anyone? उसका anagen phase is very short और उसका catagen phase is, telogen phase is very long. That is why वो बाल आपके बॉडी के पार्ट है, they are not getting that much long lifestyle. So there is a natural mechanism. If you get some clue or some remedy that work on that part, that will be very much helpful. Hair science is very big science. Still researches are not done. So this is the new generation. तो आप कुछ करो. You just find out such remedy. बहुत सारे रिसर्चेस अभी बाकी. कैंसर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, डायबिटीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन स्टिल फॉर हेयर रिसर्चेस आर लिमिटेड. मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट होल साइंस. एलोपैथी में भी इसके लिए देयर इज नो मेडिसिन टिल नाउ. Anagen is the active phase of hair. The cell in this root of the hair this is the active phase. The cell in the root of the hair are dividing rapidly.
During this phase, the hair grows about 1 centimeter every 28 days. एक महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है. And that we discussed before, कि एक साल में 15 सेंटीमीटर approximately. According to this, 12 centimeter. 12 to 15 centimeters जितना growth होता है. Scalp hair stays in this active phase or growth for 2 to 6 years. इतने लंबे टाइम तक वो रह सकता है. Why some people don't have much growth? Due to this reason. उसका anagen phase is very short. Because they have a short active phase of growth. On the other hand, people with very long hair having a long active phase of growth. मतलब उनका anagen phase लंबा है, जिनका growth अच्छा हो रहा है उनका catagen phase is short. That is reverse thing for जिनके hair short. Why hair on hair, eyebrows as we discussed are not longer. The hair on arms, legs, eyelashes and eyebrows have a very short active growth phase, that is anagen phase. That is about 30 to 40 days only. जो बालों का है, that is in years, 3 to 5 years and उसका 30 days only. तो 30 days के अंदर नई बाल ग्रोथ होगी. The hair on the arm legs, as we discussed, is very short. That is why they are very shortened compared to scalp. Till now, anagen is clear, guys. The catagen is a transition stage. As we discussed, उसका ज़्यादा much important नहीं है. The catagen phase is transition stage. This phase lasts about 2 to 3 weeks. जिसके अंदर बाल are getting detached with the root. Root से वो detach होना शुरू होता है, and then they are converting into telogen phase. और इसके अंदर क्लब हेयर बनना शुरू होता है. क्लब हेयर क्या होता है? जब भी आप पेशेंट आएगा कि सर मेरे बाल गिर रहे हैं और उसके साथ नीचे रूट दिख रहा है. If root is seen in the ball, in hair, then that is bulb. That is called as bulb. वो white भी हो सकता है और normal hair का color भी हो सकता है. Okay. Now telogen. Telogen is a resting phase. This phase lasts for about 100 days. That is approximately 3 months. For scalp, the longer of hair on the eyebrows, eyelashes, arms and legs, जिनके वो बाल ज्यादा लंबे होते हैं, उनका ये telogen phase short होता है. Okay. During this phase, the hair follicle is completely at the rest and the club hair is completely formed. Pulling out of hair, that is more important to differentiate one type of hair falling that we are going to discuss. Pulling out of hair in this phase release a solid, hard, dry, white material at the root. जब भी ये फेस के अंदर हेयर फॉलिंग होता है तो पेशेंट को रूट्स दिखेंगे. दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस फेज. ये फेस के अंदर हेयर फॉलिंग हो रहा है तो हेयर रूट्स दिखेंगे. एंड इफ यू सी हेयर रूट्स इन हेयर फॉलिंग, यू कैन से द पेशेंट कि आपकी टेलोजन फेस के अंदर हेयर फॉलिंग हो रहा है. और उसका एक टाइप है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. The more important part is the 25 to 120 telogen hair are shedding normally each day. Patient आके बोलेगा सर मेरे दिन में 50 बाल गिर रहे हैं. They are literally counting the hair. Patient एक बैग के अंदर बाल लेके आएंगे और will show you कि सर इतने बाल गिर रहे हैं. If it is 50 only, that is a normal thing. Patient को बोलो 120 से 150 तक बाल आपके दिन में गिर सकते हैं. That is the normal thing. No need to treat it at all. उसको treat करने की जरूरत ही नहीं. If you are greedy, if you want to take money, you can go for it, but that is normal. और normal. उसके लिए there is no need of treat. बहुत लोग treat करते हैं, मैं patient को मना कर देता हूँ. There is no required to give medication.
That is a normal thing. Now, types of alopecia. Androgenic alopecia, that we are going to discuss everything. Allogenic, fluvium, alopecia areata. Ringworm is not a type of alopecia, lekin that creates alopecia. That is what we are going to discuss. Ringworm. That is tinea capitis. Scarring alopecia and the hair loss due to cosmetic overprocessing. वो जो स्ट्रेटनिंग करवाते हैं and all these things. सलून वाले को पैसा खा के देखते हैं वो. Researches into hair biology, hair diseases is very in a small field. Even researches on androgenic alopecia is less than that. Perhaps 20 years ago, there were fewer than 100 people worldwide who studied about the hair. Nowadays, I must thank to Batra कि बत्रा ने लोगों को बताया कि होम्योपैथी हेयर फॉलिंग पे काम करती है. You must have to thank Batra. वो उनकी जो स्ट्रेटजी एवरीथिंग इज डिफरेंट थिंग, लेकिन होम्योपैथी हेयर फॉलिंग पे काम करता है वो बत्रा ने दिया. We have to admit, वो तो मानना पड़ेगा. We have to accept it. And especially thanks to Batra कि उन्होंने बताया कि हेयर फॉलिंग, क्योंकि इन टुडेज एरा 10 में से 7 पेशेंट आपको हेयर फॉलिंग वाले मिलेंगे. And आते ही this is still a small number compared to the diabetes and all the researches. So researches are required in alopecia. Now the main which we are facing, the most important type of hair falling, that is androgenic alopecia. That is called as AGA. Or that is called as male pattern baldness. All things are same. MPB, male pattern baldness. This is the majority of hair falling type in the world, especially in male. Even we can see that that kind of androgenic alopecia nowadays. क्यों होता है? Female के अंदर भी this kind of hair falling nowadays. क्यों होता है? High testosterone secretion. Woman empowerment. The culprit is woman empowerment. I am not against in woman empowerment. Woman is trying to be male. Yes, they are more converting into male. उनको ऑफिस संभालना है, उनको प्रोफेशनल लाइफ संभालनी है, लेकिन there is no option for house. घर तो उनको ही संभालना है. No one is going to help them. So due to that androgen hormones are getting increased. Testosterone is getting increased in female, and PCOS, as you know, as you said, PCOS is one of the main culprit. और PCOS होने का reason भी यही है, woman empowerment. Yes. See, male pattern baldness के ऊपर बहुत कम रिसर्च हुआ है. This is the theory we are going to discuss. जहाँ पे the main culprit is DHT. That is dihydrotestosterone. That is the derivation of testosterone. That is converting from testosterone to dihydrotestosterone with the help of 5-alpha reductase. बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन if you get mug up तो आपको easily याद रह जाएंगे. Hair follicle that are sensitive to DHT begins to shorten lifespan of each hair follicle affected. Generally, we have seen that कि patient के male pattern baldness में generally आगे से शुरुआत होती है. I am in first stage, and Saul is on second stage. That is the. So I am going to discuss it. Okay. So this is the first stage of male pattern baldness, जहाँ पे initially शुरुआत यहाँ से होती है. So we are going to discuss कि क्या-क्या types हैं उनके. Let's focus on DHT first.
male pattern baldness is generally characterized with the onset of receding hairlines. This is the main thing of androgenic alopecia. उसमें लाइन रिसीडिंग होती है, शेडिंग नहीं होता है. बाल ज्यादा हेयर फॉलिंग पेशेंट कंप्लेन नहीं करेगा. पेशेंट आके बोलेगा सर मेरे यहाँ के बाल जा रहा है. That is the initial stage of androgenic alopecia. The receding is very much important to differentiate the alopecia, androgenic alopecia from other type of alopecia, जिसमें thinning of crown होता है. Hair in these areas, including temples and mid-anterior scarp, appears to be more sensitive of DHT. Practically आपने देखा होगा कि शुरुआत anterior होती है, then it goes on vertex, और लास्ट में जो we call it as a horseshoe pattern, वो जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है, इसमें occipital and temporal के बाल रहते हैं. So that is scientifically proved कि vertex frontal का जो portion है, those portion are very much sensitive to DHT. Dehydrotestosterone से more sensitive. Why people are taking occipital hair for hair implantation? The reason is that hair implantation के लिए they are taking patch from the occipital region, cause they are less sensitive to DHT. That is horseshoe pattern. Now classification. That classification is called as Norwood scale. आपके वहां जितने भी पेशेंट मेल पैटर्न बालनेस वाले आ रहे हैं, एक्सप्लेन टू देम कि यू आर इन विच स्टेज. In first stage, the line receding at the frontal side, or we can say on forehead, that is gradually increased, and when it goes to the vertex part, that is in third stage. So generally हमारे वहाँ जो patient आते हैं, those patient came between the second and third stage. Generally, first stage में patient बहुत कम आएंगे. Second stage और third stage in between वाले patient आपके पास बहुत आए. When the patch is developed on the vertex, now that is called as third stage. उसके भी बहुत subdivision है, लेकिन that is not practically helpful to differentiate in clinic. So we can go with first stage, second stage, third stage. What about fourth stage? जिसमें frontal part is going more deeper and the vertex part is receding more. वो पैच बढ़ता जाता है और आगे का पोर्शन और कम होता है. The fifth stage, उसके अंदर you can see the minor line between the vertex and frontal part. फ्रंट के पोर्शन में एक छोटा सा पैच जैसा होता है, and the vertex and frontal के बीच में एक छोटी सी hairline रहती है. That is the fifth stage. Gradually that is increasing. Sixth stage, इसमें hairline नहीं रहती है. Seventh stage, उसमें occipital और simple temporal portion रहता है. And that is the classification. So you just explain to the patient कि आपका male pattern baldness हो रहा है और जिसमें these are the classification. Level 1, which is generally patients are not coming to you for treatment. The small recession in the second stage, hairline and density slowly fades, उसमें कम होता जाता है. Third में we already discussed कि hairline is going deeper और vertex के अंदर एक छोटा सा patch होता है. When patient come to you between these phase, you can explain them कि आप second और third phase के बीच में. If the patch is already developed, that is the third stage. तो उसके बाद if the line is more recent, you can explain the patient you are in the fourth stage. If the line is not there, that is the fifth stage. It is quite difficult to differentiate fifth A, B or C. So this is you can just remember ये fifth stage है कि जिसके अंदर line बहुत कम रहती है, that is the fifth stage. और you can explain with the Google, patient को photo निकाल के बताओ कि भाई ये है, you are in this stage. That is easy. If your laptop or desktop, you can explain the patient which showing the photo.
6th में and 7th में as we discussed कि vertex temporal and occipital part ही रहता है. The most important part is receding. Hair falling की complaint कम होगी, सब कम हो रहा है. This is the thing. That is the androgenic alopecia. Closer look to DHT. Dihydrotestosterone is a derivation or byproduct of testosterone. Testosterone converts to DHT with the help of enzyme, that is type 2 5-alpha reductase. This is the deeper knowledge, but guys, that is required when you are treating androgenic alopecia. आपको पता होना चाहिए. Which is held in their hair follicle ornaments. While the entire genetic process of male pattern baldness is still unknown, which is still not understood properly. Scientists do not know the DHT shrinks hair follicle, why it shrinks the hair follicle, and what when DHT is suppressed, hair follicles continue to grow. मतलब आप DHT block करोगे तो बाल क्यों बढ़ेंगे? That is still. Let's discuss as a scientific reason. See, the testosterone is converting into dihydrotestosterone with the help of 5-alpha reductase. So now, as a new generation homeopath, if you want to do research, आपको ऐसी medicine ढूंढनी है which reduces the testosterone, one thing. लेकिन when you are reducing testosterone with the medication, so that will affect all over the body. वो other parts पे भी affect करेगा. Second thing, you have to reduce the secretion of 5-alpha reductase. आपको ऐसी medicine ढूंढनी है which works on 5-alpha reductase. जो 5-alpha reductase का secretion कम हो जाएगा, तो DHT conversion, testosterone conversion into DHT that will be used. ये दो चीज पे ऊपर you can work, right? We have done one research and that will going to share with you. Yes, diagnosis and treatment. Following two treatment, I can say in market में two types of treatment are available. Male pattern baldness is completely irreversible. This is our limitation. इसके अंदर hair roots चले जाते हैं and चले जाने के बाद there is no scope, as we discuss later, कि नया hair जो root है which is not going to regenerate, वो वापस generate नहीं होगा. तो male pattern baldness is in all over the world, that is limitation कि एक बार receding हो गया, so there is no medicine in the world which can generate your hair. I'm talking about medicine, not the surgical procedure. Medicine available नहीं. Are you with me? This is completely irreversible procedure. What is available in market or what is available in medical science? That is finasteride. Finasteride कहाँ use होता है? Anyone knows? The most common prescription of finasteride, Weltum F, you know. Weltum F क्या है? That is used in BPH. The F is finasteride. उसमें जो F use होता है, that is finasteride. So this is the accidental research. People are doing research in BPH, benign prostatic hypertrophy, or during the research, they get to know कि जितने भी पेशेंट को ये मेडिसिन दी थी, उन पेशेंट को अनवांटेड जगह पे हेयर ग्रोथ. That is why WHO or that the US FDA approved this medicine for hair fall. Typical male pattern baldness. People are using finasteride in 1 mg. You can give orally. लेकिन it is very culprit remedy. जिसकी side effects भी बहुत सारे. Finasteride was originally developed in US company as a drug to treat
enlarged prostatic hypertrophy, or BPH, we can say. During the trial on male with a prostate problem, side effects of hair growth was observed. Since finasteride has already been proven by FDA to treat enlarged prostate for male simultaneously for hair fall. This is the remedy available in the market for typical male pattern baldness. This is a finasteride Intas Finalo, name of medicine, 1 mg. That is Weltamap from Intas. The remedy is finasteride in Weltamap. Are you with me, guys? Yes. 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 Now, as we discussed, कि 5-alpha reductase उसको कम करना है. So there are only 2 remedies in the market. And I can say only one remedy that is helpful in orally. That is propecia, or we can say finasteride, that works as a 5-alpha reductase, DHT blocker. The brand name is propecia, which is very common in USA. This medicine used as oral treatment, orally used hoti hai. 65% of the trial participants experience that was considered as a substantial increase in hair growth. 65% is very huge amount. Trial के अंदर 30 या 40% ही होता है. That is why that is easily approved by USA. The another remedy that is available in market, that is minoxidil, that you all know. Minoxidil is a hypertensive medicine, anti-hypertensive medicine, that was initially used for hypertension, but as same as finasteride, when people were taking this remedy orally, so they also seen the growth on unwanted part. That is why this remedy is also approved by FDA for hair growth. But this remedy is used as a local application. That is available in market for 3%, 5%, and 10%. 0.5% for 10%. You can prescribe your patient for androgenic alopecia. Local application करने में कोई तकलीफ नहीं. लोग इंजेक्शन देते हैं तो हम लोकल मिनोक्सिडिल तो दे सकते हैं. आईवी फ्रूट चढ़ाते हैं नहीं. Minoxidil was the first drug proven by FDA for the treatment of male pattern baldness. For many years, minoxidil in pill form was widely used to treat high blood pressure. Just like finasteride, research is developed very interesting side effects of drug. People taking the medication were growing hair on unexpected pattern. That is why now this remedy is used for male pattern baldness. Now, these are the allopathy. Now, what we can do as a homeopath for male pattern baldness? Do you know any natural DHT blocker? Have you ever searched in Google ki natural DHT blocker kaun se? Sorry? Bolo. So palmetto. Okay. Yes. These are the natural DHT blocker from Ayurveda. This is used since years. बहुत लंबे साल से यूज हो रहा है. One is saw palmetto, another is pumpkin seed oil, one is tea tree oil. Nowadays homeopathic बहुत product के अंदर you can see the tea tree oil. बहुत products. PNT की भी आती है, सादे की भी आती है, जिसके अंदर हेयर ऑयल और शैम्पू के अंदर you can see tea tree oil. Even pumpkin seeds work excellently as a DHT. And another is sesame seeds. These are the natural DHT blocker used since years in Ayurveda. What about homeopathy? Homeopaths क्या करेंगे? See, this is the saw palmetto. When you use locally saw palmetto, the testosterone conversion into DS testosterone is reduced
with the blocker of 5-alpha reductase. So locally आप use करोगे तो that is works as D5-alpha reductase blocker, and उसकी वजह से you can reduce the male pattern baldness. उसका जो progression होता है वो progression आप कम कर पाओ. I'm not talking कि नए hair growth कर पाओ. Progression can be reduced with this local saw palmetto. Saw palmetto is Saber cerulata, guys. That is our homeopathic medicine. And while research, we got to know that like finasteride, Saber cerulata is also working on benign prostatic hypertrophy. Simultaneously, it works locally as a DHT blocker. This research was done in our clinic before 5 years, and we use Saber cerulata as a local application in many patients. And now in market, only one hair oil and shampoo is available with Saber cerulata. That is Thekadi Homeopathic Clinic hair oil and shampoo. There is no other product having Saber cerulata as a local application in the market. We have launched it since 2 years. We are using it as a proper product. Like before that, we used it as a mother tincture to apply on the scalp as a clinical trial. And it gives excellent. Minoxidil, if patient is using, minoxidil patient को constant use करना. If he or she stopped using it, hair falling वापस शुरू होगा. लेकिन in clinical research, we have seen patient 3 or 6 months तक DHT blocker as a Saber cerulata use करता है, तो उसके बाद hair falling भी नहीं होता और receding बंद हो जाता है. I'm not talking about कि नए बाल growth होंगे. That is our limitation. लेकिन आगे बढ़ना कम हो जाएगा. That is sure short prescription. We use mother tincture on 50 patients in clinical trial. Now we are using in all the male pattern baldness वाले patient को. 30% patient improved with this medication without any local application, without any homeopathic medicines. This trial was done only on local applications. No other homeopathic medicine was given to these patients. इनकी constitutional चल रही होगी या कोई और complaint के लिए, that is different thing. लेकिन specific for hair, there is no other medication. Now it is your time to do experiment on Saber cerulata at your clinic, at your patients. Start using Saber cerulata mother tincture as a as in male pattern baldness and see the result in 3 months. Permanent cure for androgenic alopecia available in market, that is surgical treatment. Surgery, hair implantation, you all know. There are 2 types of hair implantation: follicular unit transplantation, that is the old version. Old version में what they were doing, एक पैच लेते थे occipital में से, पूरा पैच implant करते थे at the bald patch, bald part. Now what they are doing, that is follicle and unit extraction. एक root उठाते हैं with the instrument, एक root implant करते हैं. The rate for implantation is per hair. एक hair का 15 रुपये. This is the thing. Or if you are going somewhere बड़ी जगह है तो that is 150 rupees. That cost depends on hair root. This is the huge market, guys. Huge. I'm talking about business. I'm not talking about clinical practice. People are वो instrument ले रहे हैं. People are doing transplantation. That is very easy to do. Side effects भी ज़्यादा नहीं है. बहुत जो तो पैरासिटामोल इंजेक्शन दोगे तो भी आएंगे. तो जो सर्जिकल की जो साइड इफेक्ट होती है, that maybe remain there. Like otherwise, there is no other side effect. You can even go for this. If you have money for instrument, 2 lakh का या 1.5 का आता है, not much expensive, you can buy it. This is the androgenic alopecia. Any doubt, guys? Any doubt for androgenic alopecia? Online people, any doubt? Is there any medicine for that? That we are going to discuss in later.
We Sir, have, can we use the subcellulata mother tincture after FUE, whoever done FUE? FUE के बाद definitely use कर सकते हैं. Why not? Yes. वो Okay. प्रोग्रेशन आगे बढ़े नहीं, उसके लिए we can definitely use it. क्योंकि But sir, that medicine is generally used for BEP, no, like benign enlargement of prostate. sorry, which one? Sabal cerulata. Yes, that we are using, na? That we are using for benign prostatic hypertrophy orally Yes. in homeopathy. So for directly applying the mother tincture on the scalp, it will help for your hair growth. Yeah, that is for local application. I'm not talking about oral application. Orally nahi leni hai. That is for local application. Okay. Mother tincture. Not mixed with oil. You can mix it, not an issue. We have introduced a product which contain arnica, jaborandi, and all the oil product along with sabalcerulata. Okay. You can ask your patient कि आपके routine hair oil के अंदर sabalcerulata mother tincture add कर दो. Basically, why not to use mother tincture? Mother tincture is based from alcohol, so that works as an irritant. वो irritation create करता है on the scalp. That is why we have introduced in oil base. तो हेयर ऑयल के साथ और शैम्पू के साथ when we applied it locally, तो पेशेंट को लोकल इरिटेशन नहीं हो. और you can ask your patient कि वो locally mother tincture use कर सकते हैं along with hair oil. Sir, in which oil we can use it? That is the controversial thing, which oil to use. बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे, लेकिन the general criteria or general information I give to my patient is which suits you. Basically, patient with dandruff, उनको coconut oil use नहीं करना. Coconut oil से dandruff बढ़ता है. That is practically seen. So never ask the patient having dandruff to use coconut oil. उनको बोलो उसके अलावा आपको जो भी यूज करना है, you can use it. Patient को सीसम ऑयल यूज करना है तो patient can use it. That works as a DHT blocker. कोई भी Sir, on which age you have used or you have done research on your clinic? we just use for research as a mother tincture, but now we are selling the oil that is coconut based. Okay. Sir, which have you made? Can you tell the brand? Sorry, Which oil have you made? that is Thekadi homeopathic health hair oil and shampoo. Okay, can we find it online? No, that you have to purchase from us only. Okay, sir. I will share the photos of that hair oil and shampoo. Sir, please. Yeah. Okay. And one more thing, as a business person purpose, we are giving 50% discount to every homeopath. Okay. Yeah. Thank you, sir. Okay. Another short topic, that is trichotillomania. Anything you know about trichotillomania? Psychic condition where patient pulls around hair and sometimes it Yes. That is trichophagia. When patient is eating and when patient is pulling, that is called as trichotillomania. That is very tricky condition to treat, guys. Like OCD, it is very difficult to treat trichotillomania, where patient is pulling their hair in stress or whenever they are in a stress stage or when they are in free stage. There is so much debate behind this, this is a simple habit or this is a psychological condition. It can be like nail biting जितनी habit भी हो सकती है और ये psychological disorder भी हो सकता है. Trichotillomania is the condition in which the affected individuals pluck their hair by own. Often the hair on the scalp is plucked to leave bald patches. वहाँ पे bald patch हो जाता है. When you are taking history of the patient and when you see that patch, any kind of patch on the scalp, ask the patient. आप stress में होते हो तो बाल खींचते हो. That typical patch you can see in female, especially on the frontal side. Typical एक जगह के बाल कम हो जाते होंगे. There is much argument about whether trichotillomania is a habit
like nail biting or more psychological problem. Either way, affected individuals are usually not aware that they are plucking their hair, like OCD. OCD may be ऐसा होता है, they are not aware with the situation, but they have to arrange the things. They constantly looking at the mirror. These are the OCD issues. They are constantly washing their hair. We can consider it as OCD also. When they are made aware of it, they often find it is hard to stop. It is difficult to treat OCD patient. क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होते हैं और अवेयर होते हैं तो that is not under their control. Which is the best remedy in homeopathy for OCD? Yes, that is cipilinum. Cipilinum randomly you can give for OCD. Randomly. If you get some specific symptom, you can think another remedy. In cipilinum every week you can use for OCD. Which remedy, sir? That is cipilinum. You can use cipilinum in 1 m every week. If you don't get any specific symptom or any constitutional remedy. Yes, sir, it's great work. Yeah. For how much time? Till you get the result. Generally, if medicine is working, medicine shows result within 2 to 3 visits. Otherwise, you have to change the remedy. Patient आपके पास एक faith लेके आता हो, so they will give you 3 or 4 chances only. If patient is in any condition, if patient is not getting result, he will switch over to another pathy. Or he will switch over to another. Nowadays, we are seeing people are switch over to homeopaths. अभी ऐसा नहीं है कि एक homeopath के साथ दवाई ले ली, तो they are switch over to another pathy. ऐसा नहीं. They are switch over to homeopaths. That is good thing. And for that, I would like to say never criticize anyone. आपके पास ऐसे patient आएंगे who already took medicine from another homeopath. That might be a senior one. So never criticize them that they are using polypharmacy, they are using mother tincture, they are using higher potency. Never criticize. That creates a wrong impression to your patient about homeopathy. वो एक wrong impression लेके जाएगा कि ये नहीं जो भी आपके डॉक्टर ने नाम बोला कि ये giving higher potency में कुछ होता नहीं है लेकिन that works is a wrong impression to patient. होम्योपैथी के लिए एक अलग इंप्रेशन लेके जा. So never criticize. This is the yes. Some individuals who pluck their hair also even eating the condition called as trichophagia, and that is the dangerous condition. Hair is not digestible thing. वो digest नहीं होता. And the constantly hair is irritating to the stomach, to the intestine, that creates ulcer in the intestine. Gastric ulcer or peptic ulcer हो सकते हैं. This is a very dangerous condition that needs to be treated with some urgency. Hair is not digestible in the stomach. It can build up into the hair ball. वो एक ball आपने कोई newspaper में पढ़ा होगा कि इतने बाल निकाले. That creates a hair ball. This can severely irritate the stomach lining and leading to the severe ulcer. It is possible to die from trichophagia. There is one possibility. जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है. Treating trichotillomania is quite difficult. लेकिन psychological treatment, as homeopaths are famous for psychological treatment, so we can treat. Along with that, counseling is very much important. We have rubric in our repertory, that is head, hair, ulda. 2 remedies are there, that is in 3 mark. One is Belladonna and Cupromet. We have treated one patient with Cupromet when patient having desire to pull while coughing. Mother एक बच्चे को लेके आई थी and she told us कि सर जब से उसको खांसी शुरू हुई है तब से वो बाल खींचता है since 5 days. And when we see in repertory the medicine came, that is Cupromet, and patient having same complaint of Cupromet coughing. What are the symptoms of Cupromet coughing? Expectation. Bouts of
I think 3 bouts of the 3 bouts and 2 bouts of paroxysmal coughing. Yes. Then coughing with vomiting, coughing with nauseative feeling. Anything? Metallic taste, that is cupromet. Then gagging cough, gagging cough. gagging cough. Okay. क्या expectoration थे? color of the expectoration is also like copper. Okay. Yellowish, Okay. Anything Three else? paroxysm, 3 paroxysms cough. Yeah, 3 or 2 or more than 3. Yes. Okay. Then are you using cupromet for nauseative feeling, guys? Anyone of using this remedy? Open Boricla. There is mentioned in Boric, this is the remedy having the great nausea than any other remedy. No. छोटे बच्चे that can be habit, we can consider it as habit. और बच्चों के अंदर psychological cause is very common. Infant के अंदर that is normal thing. हाँ वो उनको मतलब they are developing the senses. वो senses develop करते हैं. And here is the thing which is very the different texture. तो बच्चों को मजा आता है. That is why they are kept their hand in hand. और वो sensory development होता है. That is what. दूसरों के लिए गुस्से में खींच रहे that is different thing. और ऐसे ही बाल में हाथ डाल रहे that is different. If they are pulling in anger, that is due to anger. You can think of कौन सी medicine है? Pulling hair in anger. Yes, Alzheimer's. Or hitting in anger, that is also Alzheimer's. Throwing the things in anger, कौन सी medicine? Chamomilla and Stepizide. Sina we can also think. Again, more specific is Stepizide. Cupromet. Can anyone got that symptom in Boric? Introduction में mention किया. हाँ. Nausea greater than in any other remedy. So you can use this remedy for nauseative feeling. If you use Dipicate, if you already use colchicum, if you already use bismuth or arsenic acid, even though you are not getting result, you can think of cupromet. Coughing के साथ साथ nauseative or vomiting, the remedies, the leading remedy is cupromet. We are using cupromet for bachas in coughing along with nauseative feeling. बच्चों के अंदर nauseative and coughing is very common along with. And when patient is pulling their hair while coughing, you can think of this. We have used this remedy only once while coughing, and we got the result. Mind pulling hair. The remedy is belladonna, and the 2 mark remedy is that is Lilium tig. That is due to mental cause. And this one was head hair pull. So in general, if the child or patient is pulling the hair, we can think of this rubric, and the mental cause is there, we can think of this. Lilium tig, कैसा होता है? Anyone knows? Lilium tig personality. That is female remedy, yes. Okay, then This sexual desire and keeps herself busy. yes, definitely excessive sexual desire. और उसका गुस्सा ऐसा होता है, she just throw the things simultaneously. Parents आके बोलेंगे कि वो गुस्से में दरवाजा पछाड़ के अंदर चली जाती है. That is Lilium tig. That is the typical symptom of Lilium tig mentioned in cat. इतना गुस्सा होता है कि वो दरवाजा बंद करके पछाड़ के अंदर चली जाती है. That is Lilium tig. Depressive female होती है. With excessive sexual desire and anger. That is Lilium tig.
This is one case of trichotillomania. Child having desire to pull the hair of eyelashes, which can result with homeopathic medication. This is the left side of part. We got result with Netramure. Patient Netramure के symptom कौन से guys? I'm not going to discuss the case. Discussing case in seminar, that I feel that is bluffing only. When you are using 3 or 4 remedies in your practice and you are showing only one remedy, that is different thing. So I'm not going to discuss the cases because each and every case is different. Netramure की personality क्या है? Netramure is commonly used. Brief. Weeps बोला किसी ने बोला? हाँ, she weeping but not in presence of other. मैं bathroom में जाके रोती. And consolation aggravation. Then 1-to-1 relationship, that is Netramure. वो husband को ही प्यार करती है और husband के साथ ही झगड़ती है. That is Netramure. Netramure is nowadays remedy. We are using in 4 to 5 patients from 10 patients Netramure. That is very common prescription nowadays. और ये बच्चे के अंदर the ailment was from changing the school. उसने school change किया था. Father was working in some bank और वो वहां से shift हुए थे अहमदाबाद में, and suddenly creating such habit, such thing. Netramure was given to this child. और वो friend से अलग हो गया. Another remedy when changing the location, the remedy is Califos. जगह चेंज की, प्लेस चेंज किया, उसके बाद एलिमेंट. Always think of Califos. You can give Califos in good potency. You can give repeatedly every week. इसमें affection change of place की वजह से या change of friends या Both can be considered. बच्चा है, she was not able to explain. We take it as both, and Netramure was matched, and that is why we prescribe Netramure. And we give Califos in a 6x potency. Califos biochemical. So Califos 6x potency helps to reduce the overthinking. Overthinking कम हो जाता है. That helps our patient. In psychological patient, you can think Califos as a sleeping pill. रात को नींद नहीं आती है, you can think of Califos. Califos is most frequently used medicine in homeopathy for sleeping pill to reduce the thoughts. Any other remedy you are using in your practice for sleeplessness? Classiflora. Ophia. Sorry, doctor, कौन सी? Passiflora. Passiflora. Okay, yes, Passiflora in mother tincture. Ophia is one of the good remedy. Opium. Yes, opium we can think. Even guys, chamomile. There is also coffee and chamomile. Lekin patient having excessive anger, we can think of chamomile. Even in adult patient. Only don't use chamomile in pediatric patient. That helps to calm the patient. One of the best remedy, neurotic remedy कौन सी है एलोपैथी में? Now उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम करती है? There is no remedy for nerve pain in allopathic science. कौन सी? Pregabalin. That is the stimulating for the nerves. That is not the nerve pain remedy. Pregabalin. नहीं करती. Neuropathy में there is no remedy for allopathic science. They are giving methylcobalamin, B12 and pregabalin. ये दो चीज यूज करते. That's it. Pulsatilla has very good result in any Yes, neuropathic Pulsatilla condition. works excellently, and simultaneously you can think of chamomile. It is one of the best nerve remedy ever. When patient having pain or neuralgic pain, or we can think the diabetic neuropathy, we can prescribe chamomile. It works, guys. Believe me. Back to our topic. What, sir? Chamomile. It works. Yes. Yeah. Okay. The another type
The most common type we homeopaths or we practitioner feel or we see in our practice, that is callagene effluvium. That is another type of hair falling. We discussed that is androgenic alopecia. Now the another type, that is callagene effluvium. What is happening in this callagene effluvium? Callagene effluvium is probably the second most common form of hair falling in the world. क्यों होता है? If the number of hair follicles producing hair drops significantly for any reason during the resting phase, that is the telogen phase, as we discussed in the hair cycle, this will be significant increase the dormant state. In telogen state, hair follicle, the result is shedding. In androgenic alopecia, we were discussing about receding. There were no shedding. Patient आगे बोलेगा कि सर मुझे बंच में बाल गिर रहे हैं, मैं माथे में हाथ डालूं तो मुझे बाल हाथ में आ. That kind of excessive shading, think of telogenic effluvium. How to diagnose telogenic effluvium in practice? As we discussed, कि telogen phase के अंदर जब भी hair falling होता है, तो we can feel the roots in the hair. बालों के अंदर roots मिलते हैं. तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, तो पेशेंट को पूछो कि आपके जो बाल गिर रहे हैं, उसमें नीचे roots जैसे दिख रहे हैं. If roots are seen in hair, the most probably cause is telogenic effluvium. क्या causes है? And differentiating point of telogenic effluvium. There is usually no hairline recession. Male pattern baldness जैसी recession नहीं दिखेगी. Patient आगे बोलेगा कि मुझे excessive hair falling हुआ. That is called as shading, which can be recognized by the bulb, small bulb or canteen bulb that might be white or that might be black. What? लेकिन bulb दिखे. Pigmented or unpigmented make no difference. People with telogenic effluvium never completely lost all their scalp hair. This is the main thing. The telogenic effluvium is completely reversible condition. Completely reversible. अब बोल रहे थे ना patient treat नहीं हो रहा है. This is the completely reversible condition जिसके अंदर पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो सकता है. कैसे पेशेंट ट्रीट क्योर नहीं होते, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट यू कैन गिव अ कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट कि आपको टकला नहीं होने देंगे, आप में बाल्डनेस क्रिएट नहीं होने देंगे. पेशेंट ऐसा बोलेगा सर इतने सारे बाल गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है 2-3 महीने में तो मैं टकली हो जाऊंगी. दैट इज द कॉमन सेंटेंस फ्रॉम द पेशेंट. लेकिन यू कैन गिव द कॉन्फिडेंस कि दिस इज द टिपिकल telogenic effluvium जिसमें बाल्डनेस नहीं होगी, डेंसिटी कम होगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन बाल्डनेस नहीं होगी. इट इज नेचुरल थिंग, लेकिन वी कैन से कि मैं नहीं होने दूंगा. Whatever form of hair loss telogenic effluvium takes, it is fully reversible condition. Are you with me, guys? Yes. Yes, sir. जोर से आवाज. Yes, sir. Yes. Now this is the organelle part. Organelle को exciting cause or maintaining cause we learned. This is the thing that allopathy science is also believing. When the type of telogenic effluvium, one is the environmental insult or the shock, the sudden shock, mental or physical, whatever it may be, that works as exciting cause in organelle. Hair follicles so much that they decide to go into the telogen. Insult होती है, physical या mentally या mental shock लगता है. That can be anything. Delivery भी हो सकती है, fasting भी हो सकता है, weight gain भी हो सकता है, sudden diagnosis of thyroid भी हो सकता है. That can be insult. बच्चे को स्कूल में टीचर ने धमकाया और उसके बाद उसको hair falling शुरू हो गया.
पेरेंट्स ने मारा और उसके बाद हेयर फॉलिंग शुरू हुई, that is considered is telogen effluvium. This form of telogen effluvium can develop rapidly and may be noticeable 1 to 3 months after receiving the shock. As we discussed before, this is happening after the 2 or 3 months of shock. तो पेशेंट को डेंगू हुआ तो उसके नेक्स्ट डे से हेयर फॉलिंग नहीं शुरू हो भी सकता है, लेकिन when you get the patient having telogen effluvium, try to find out the triggering factor or exciting cause before 3 to 4 months. पेशेंट को पूछो 3 या 4 महीने कोई मेडिसिन ली थी, 3 या 4 महीने पहले कोई डिसीज हुआ था, 3 या 4 महीने पहले कोई वैक्सीनेशन लिया था, 3 या 4 महीने पहले कोई ऐसी इवेंट हुई थी that was shock for you. So that was considered as a triggering factor of telogen effluvium. This form of telogen effluvium usually lasts less than 6 months. That is more important. पेशेंट को 3 महीने से हेयर फॉलिंग हो रहा है, उसको डिसीज हुए 3 महीने हुए तो ऑलरेडी 6 मंथ्स हुए. Now we have 3 months period. Now you can say the patient कि 3 या 4 महीने मेडिसिन लीजिए, your hair will regain again. वो नेचुरली भी हो सकता है. When you are treating with your medicine, you can take that much time. Almost 6 months जितना चलता है. Or in some patient it lasts up to the 1 year. The worst part of telogen effluvium जिसमें डेंसिटी कम हो जाती है. We can see the scalp. पेशेंट बोलेगा कि सर मैं हेयर ऑयल करता हूं तब मेरा स्काल्प दिखता है, बालों में जब भी तेल डालता हूं I can see the scalp. So that is reduced density. That is not the male pattern baldness. Another thing, another type, that is persistent triggering factor. That is maintaining cause according to Arnold. और इवन जो पेशेंट को क्योर नहीं होता है उसमें तो मेंटेनिंग कॉज इज दैट. स्लोली वो स्लोली होता है, नॉट लाइक एक्साइटिंग कॉज दैट वी डिस्कस बिफोर. स्लोली एंड परसिस्टेंट होता है. पेशेंट बोलेगा कि मुझे 10 साल से हेयर फॉलिंग हो रहा है, लेकिन 10 साल में उसको बाल्डनेस नहीं हुई, 10 साल में उसकी डेंसिटी कम हुई और स्टिल सेम हेयर फॉलिंग हो रहा है. सर मैं बाल में हाथ डालूं या हेयर वॉश करूं तब एक्सेसिव बंच में बाल गिर. That is persisting cause की वजह से वो 12 साल से हेयर फॉलिंग से परेशान हो गई, लेकिन बाल्डनेस नहीं. That is telogen effluvium. Explain your patient. लेकिन ट्रिगरिंग फैक्टर मस्ट बी देयर. सासू बोलती है उसकी वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है. That is the common thing. Female is not trying to adjust. शादी के बाद हेयर फॉलिंग शुरू हो गया. She is trying to adjust in new environment. And due to that, she is suffering from hair falling. अहमदाबाद में ही रहती थी और अहमदाबाद में ही शादी हुई, फिर भी शादी के बाद हेयर फॉलिंग शुरू हुआ. प्लेस चेंज नहीं हुआ है, पानी चेंज नहीं हुआ है, सिचुएशन चेंज. That works as a triggering factor. The follicles may enter a telogen phase as they normally would, but instead of returning into anagen phase, they are remaining in telogen phase for a long time. लंबे टाइम तक वो थर्ड स्टेज टेलोजन के अंदर रहते हैं. That is why they feel persistent hair falling. Constant hair falling होता रहता है. Now the main part, that is causes of telogen effluvium. क्या क्या causes हो सकते हैं? As I already mentioned, लेकिन फिर भी कौन से reasons हो सकते हैं? Guys, hair telogen effluvium, shock, बॉडी के लिए शॉक कौन से हो सकते हैं? जॉब चेंजिंग, कॉर्पोरेट लेवल, जॉब का प्रेशर, दे हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, 10 बजे तक 11 बजे तक कंपनी में काम कर रहे हैं. दे हैव टारगेट, इन देयर कॉर्पोरेट लाइफ, दे आर फेसिंग द इश्यू. इसकी वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है.
Classic short-term telogen effluvium often happens in the woman soon after giving birth. That is a classical example. बहुत सारे पेशेंट आएंगे, they just let you know कि सर क्या मैडम मैंने बच्चे डिलीवरी हुई उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद मुझे हेयर फॉलिंग शुरू हुआ. That is classical example of hair falling. That is called as postpartum alopecia. There may be the significant hair shedding, but most women regrow their hair quickly. बच्चा 1 साल का होता है या 1.5 का होता है, तब तक जनरली हेयर फॉलिंग कम हो जाते हैं और नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाता है. लेकिन तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, तो उसको ट्रीट क्यों करना है? ये तो 6 महीने में अच्छा हो जाएगा, 1 साल में अच्छा हो जाएगा. Why we have to treat this? वो शेडिंग हो रहा है तो हेयर डेंसिटी कम ना हो, that is why we have to treat. Nowadays patient गूगल करके आएगा, you or she know each and everything about hair falling, उसको telogen phase भी पता होगा, तो now you have to explain him कि भाई telogen effluvium is self limiting, लेकिन आपका जो शेडिंग हो रहा है उसकी वजह से हेयर डेंसिटी कम हो रही है, that is why you need it. अदरवाइज 6 महीने में मिट जाएगा. लेकिन आपको बाल की डेंसिटी अच्छी रखनी है, then you need to treat. Vaccination is one of the cause. After COVID vaccination, many patients suffering from hair falling, even skin disease, even heart troubles. वो जिम में दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ जाता है. कोई बोल नहीं सकेगा, आप देशद्रोह में फंस जाओगे. Vaccination is one of the cause. CV stroke भी हो रहे हैं. In young age, 30, 35, 40, that was not common before COVID. 20 साल 22 साल के बच्चों को हो रहा है. 20-22 साल के sudden attack और collapse, वहां पे खत्म, कोई डेथ हो जाती है. There is no scope of treat such person. Vaccination might be the cause, लेकिन कोई नहीं बोल सकता है. बोल रहे हैं धीरे-धीरे कुछ तो. नहीं बोल सकते. जो बोल रहे हैं वो सफर हो गए. This is the Indian democracy. Even crash diet, keto diet or intermediate diet, that can be a cause. So बहुत लोगों को weight loss करना है, बहुत लोग are working on diet plan, that might be the cause. Even diet की वजह से, diet is not proper, vitamin deficiency can create, and that is also a cause of telogen effluvium. So in the patient of telogen effluvium, we can give multivitamins. You can use those remedies along with homeopathic medicines. Physical trauma such as car accident or anything, father ने मारा और hair falling हो गया, you can think of telogen effluvium. Surgery can sometimes be a shocking for the patient or the body. We can think of this cause, that is telogen effluvium. After surgery, ailment from surgery. More persistent insult can result in more persistent telogen effluvium. Chronic stress, diet deficiency, lack of zinc, lack of amino acid, even that lysine, B12, calcium, D3, everything can be the cause of telogen effluvium, which is very common. 10 में से 7 पेशेंट को B12 deficiency है, तो that is the cause of hair falling. तो आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हो, and patient is not getting much improvement, तो at least go for the cause. 3 महीने आपने दवाई दी थी, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे हेयर फॉलिंग कम नहीं हो रहा है, इमानी, तो रिपोर्ट करवाओ, TSH चेक करवाओ. That might be the cause. हो सकता है, I'm not telling you कि होगा ही, लेकिन हो सकता है. From constipation, आपके पास एक बच्चा आ रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, having chronic constipation. हफ्ते में एक ही बार स्टूल जा रहा है, not getting weight. Check for TSH. We can find out the thyroid or Down syndrome in patient. आपके GP क्लिनिक पे आप जब बच्चे के अंदर थायराइड डायग्नोस करोगे, तो that will be the height of patient बहुत खुश हो जाएगा. आप ट्रीट करो ना करो, that is secondary. लेकिन chronic constipation है बच्चे के अंदर, always check for TSH. TSH चेक करवाओ ही, भले ही आपको पंचर नहीं करना है बच्चे के अंदर, आपका माइंडसेट ऐसा है बच्चे को क्यों गोदा दलवाना है, लेकिन that is required to diagnose. TSH चेक करो.
Thyroid is one of the main triggering factor behind the hair falling, that is telogen effluvium. As the environmental insult passes, the body recovers and telogen effluvium subsides and new hair growth begins. It is the normal physiology. Triggering factor exciting cause चला जाता है, patient is constant smoking और उसकी वजह से खांसी हो रही है, तो we have to stop the smoking. कौन सी medicine? Coughing from the smoking, sore throat from the smoking, smoker's cough. Ammonium carb is one of them, but the leading remedies, ammonium carb is more for charcoal smoke. हुक्के के बाद जो कफ हो रहा है, तो we can think of that ammonium carb. Noxomic. हुक्का ले लिया या फिर वो धुआं कर दिया, this remedy is capsicum for smokers. पेशेंट को बोलो कि स्मोकिंग बंद करे, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सॉर थ्रोट हो रहा है या गले में आवाज आ रही है कफ की, we can think of it. Capsicum. Yes, capsicum, that is written in bold. निकाल, sore throat from smokers. Smokers cough, yes, something is written. Okay. Next compound, bold. वो इंट्रोडक्शन बाद में शायद. Singers, drinkers and smokers, दोनों में we can think of capsicum. Now back to hair falling. Hair falling postpartum or after delivery, we have this wonderful remedy, that is 3-mark remedies: Lyco, Platina, and sulfur. Again, when we are talking about pregnancy or delivery, always think of sepia. Sepia works excellently during the pregnancy. Any complaint during the pregnancy, nauseative feeling हो रही है, vomiting हो रहा है, anything. Even sepia helps to, वो जो $1.5 लाख वाला पैकेज क्या था, we अभी मार्केट में चल रहा है. People are giving 1.5 lakh का, I just heard it morning only, कि pregnancy रखने के लिए लोग एक पैकेज दे रहे हैं जिसमें if they conceive तो वो 1.5 lakh उनका, if they don't conceive in 6 months उनको ₹50 वापस मिलेगा. That is what people are doing in homeopathy. That is good thing, अच्छा है. That is a marketing strategy. लेकिन you can think of sepia to conceive. Sepia works excellently to get pregnant. And what is the homeopathic contraceptive? No, it is Netramule. People are using Netramule as a natural contraceptive in homeopathy. According to me, that is not the contraceptive. Even we are using to get menses or to delayed menses Netramule, but people are using Netramule as a natural contraceptive. They are giving in 6x potency or sometimes 30 potency. As a वो कौन सी पिल देते हैं? Like 21 balance. That is called as IP. नहीं उसी पिल नहीं वो तो लाने के लिए ना, वो लाने के लिए है, लेकिन वो 21 days की क्या है? Northeastern. Yeah, that is norprogesterone. Yeah. So people are using Netramule as a norprogesterone. Estradiol, northeastern. वैसे ड्यूरेशन में देते हैं जैसे वो तो मैं यूज नहीं करता, मुझे पता नहीं. दोनों यूज होती है, नॉर्थईस्टर्न ज्यादा यूज होती है. सॉरी, नॉर्थईस्टर्न और एस्ट्राडियोल ज्यादा यूज होती है. हाँ ज्यादा ही. Now abdominal disease after जो hair falling हो रहा है, तो remedy is like podium. Acute exhausting disease, dengue के बाद hair falling हो रहा है, which is very common. Typhoid के बाद hair falling हो रहा है, which is very common. Even COVID के बाद hair falling हो रहा है. So we can think of the leading remedy, that is carbovage. Another remedy is thallium metallicum, and another remedy is mancinella. Mancinella is a depressive remedy in young age people. Teen age में, when patient is suffering from depression, we can think of mancinella.
Along with that, when we get this ailment, we can think of Manzanilla. 3 remedies: carbovage, Helium metallicum, and Manzanilla. Along with that, which is not mentioned in repertory, that is China. Loss of vital fluid ailment. You can think of China. Injury Any disease type or कोई भी Sorry? disease में after typhoid after from any exhausting disease, anything. oh, Even viral okay. fever के बाद भी जो बुखार जो hair falling हो रहा है, so we can think of these 3 remedies. Helium metallicum, carbovage, and Manzanilla. That is mentioned in boring in each and every remedy. Grief from the most leading remedy we know, that is Netamune, and never forget about acid phos. Acid phos is also leading remedy for grief and for depression. The leading remedy over here mentioned in 2 mark, that is acid phos. पेशेंट आके बोल रहा है सर बंचों हेयर गिर रहे हैं, बाल में हाथ डालो तो गुच्छों में बाल गिर रहा है. The remedy is phosphorus. We are using this remedy frequently in our life. 200 or 1 MOD. Simply prescribe this remedy. It works. Phosphorus 200 OD or TDS or phosphorus 1 MOD. In talogen if you will, it works. During lactation, after delivery is ailment, and along with lactation is ailment, we can think of remedy that is Netamune. During lactation phase. During menopause, sepia is always there. When the hormonal changes is there, always think of sepia. That can be in teenage, that can be pregnancy, that can be menopause. Hormonal changes is the cause, the remedy is sepia. Another remedy during menopausal age, the leading remedy is lachesis, which is not mentioned in repertory. Due to menopausal age, due to hormonal change, when patient is suffering from disease, we can think of this. वापिस आ रही है, आगे पीछे हो गया है. क्या था? Menopause female. So menopause we can consider in male and female both. Male में भी hormonal changes होते हैं. और especially in female, that is ये कौन सी medicine है मैं use नहीं करता. Hypothalamus, hypo, and I am not using that one. मुझे पता है. Parturition after, we already discussed that after delivery, cross reference is given. And during pregnancy, the single remedy 3 mark is given like this. Single remedy. During pregnancy, बहुत hair falling हो रहा है. You can think of laxis. Spot alopecia areata we will discuss later when we are discussing alopecia areata. Vaccination ailment for, we all know the mesothelium is there. We all know thuja is there. We all know silicea is there. The other remedies are sarsaparilla or melandrinum. Melandrinum is one of the ones. After vaccination, even after vaccination, skin eruption happen. We can think of melandrinum. Even पानी में काम करने के बाद dryness हो रही, which is very common in lower middle class family. चौकड़ी में काम करते हैं और उसके बाद पैरों में रैशेज हो जाते हैं या पैरों के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं. The remedy is melandrinum. The indication of melandrinum is thickening of skin, pores in skin, and dryness in skin. Due to work in what? पानी में काम करने की वजह से स्किन के ऊपर अफेक्शन हो रहा है या ailment after vaccination, think of melandrinum. Anxiety, we all know Netamune, Ignatia, all the remedies, even acid phos. Along with that, ailment from anxiety. These are the causes of talogen effluvia, as we discussed. So, उसके लिए we can think of silicea. We are giving calphos. We can think of acid phos. We can think of Netamune is not given over here. Oh. Netamune is not given in repertory, but we can think of Netamune.
prolonged anxiety, carcinosin. क्या थी में carcinosin की guys? Perfection. Why carcinosin is perfectionist? Why? The reason behind perfection of carcinosin? Jealous. Over ambitious parents, dominance of parents, and over expectation of the parents. That makes the carcinosin perfectionist. Carcinosin की perfectionist is not like Nux vomica की fastidiousness or arsenic or fastidious. He wants each and everything perfect due to pressure of parents. Nowadays parents को बच्चे perfect चाहिए. And that is why carcinosin become. वो carcinosin इसीलिए पैदा होता है. Ailment after insult, कौन सी medicine है guys? Insult aggravation. Ailment prone. Capitegria. Capi and ignatia. Yes. Even we can think Ignatia. of stramonium. Sorry? Stramonium. Yeah, the remedy is stramonium. We can think of stramonium. Ailment after insult. Abdominal disease we discussed, acute exhausting disease we discussed. Grief from we discussed. Now, treatment of telogenic pneumonia. As we discussed कि इतने cause है उसके ऊपर से we can prescribe. लेकिन वो cause भी निकालना जरूरी है. So when patient is suffering from mental issues, so try to counsel the patient. वो counseling is required along with the treatment. Causative factor है, if the smoking is there, we have to remove the smoke. Causative factor remove करना पड़ेगा. If dietary is the issue, patient को explain करो कि ये खाना है. Patient is suffering from iron deficiency, iron वाली चीजें करो. क्या खिलाना है? Iron के लिए dates, green leafy vegetables, beet, गाजर, गुड़, बाजरी नॉनवेज जो खाते होते हैं. Even thyroid is the cause, treat the thyroid. Thyroid is one of the triggering factor of telogenic fluvium. Try to find out the cause. Go for TSH. If you get the TSH elevated, hypothyroid is there, you have to treat hypothyroid. Phosphorus, we are using frequently as I discussed. Phosphorus 200 TDS or phosphorus 100. If you don't get any cause, आपको नहीं मिला कि भाई मुझे कोई cause नहीं मिल रहा है, I don't get any modality, I don't get any constitutional remedy, think of phosphorus in telogenic fluvium. Simply prescribe. Even carbovate, we are giving CV 200 TDS. हमारे द्वारा जितने भी आते हैं, they know कि हमें तो carbovate की टंकी लगवानी है. We are using carbovate very frequently. That works excellently in hairfalling, even in gastric complaint. Even China, ailment after any disease, we can think of China. Helium metallicum is one of their. Mancinella is also there. Even thyroidinum, we are giving every week or every 15 days in bonum potency. Hypothyroid or hyperthyroidism, hypothyroid or hyperthyroid, whatever it may be the cause, we can think of thyroidinum. It works in both the conditions. Hypothyroid will be काम करेगा, hyperthyroid will. Which potency, sir? It stabilizes the TSH, it stabilizes the thyroid hormone. We are using thyroidinum in 1M potency if required every week or every 15 days. If TSH is not getting controlled with thyroidinum 1M, we can think of thyroidinum 10M. It works, guys. Paramphos, if the iron. Can we use along with thyroid medicine, sir? Definitely. You can use all the homeopathic medicines along with the allopathic medicine without any doubt. Both when patient is asking you, what kind of explanation you people give to the patient? क्या explain करते हो? Sir, आपकी दवाई के साथ हम हमारी दवाई के साथ होम्योपैथी ले सकते हैं? हाँ, तो क्यों? क्या? दोनों दवाओं के काम करने का जो रास्ता है वो अलग-अलग डिफरेंट. Yes. Both the medicine are working on different plane, different way, so they are not interacting with each other. You can definitely use the medicine. There is no doubt.
Okay. एक ब्रेक ले लेते ना 10 मिनट ठीक है. go for loop guys if you are guys we are taking a 5-minute break and then we are going to start alopecia immediately. Okay. Saru फटाफट पढ़ो ना guys let's wait for 5 minutes so guys एक पण आता है दस टक्का पानी मिला
another type, that is alopecia areata. And alopecia areata is completely reversible thing with homeopathic medicine. alopecia areata को गुजराती में कुंदरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में चाय भी बोलते हैं. Anyone from Maharashtra? Chai बोलते हैं? Yeah. That is called as chai. So the third most common form of hair loss, that is alopecia areata. 2 in every 100 people will get alopecia areata at some point of their life. कहीं ना कहीं बार वो ये होता है. That is sometimes self-limiting. 1-2 पैच होते हैं that can be easily reversible. वो अच्छे भी हो सकते हैं. It is not contagious. The most thing you have to explain to the patient कि वो आपको हुआ है तो आपके दूसरे बच्चे को या आपके कोई भी रिलेटिव को, that is not contagious, तो किसी को नहीं होगा. You can't catch alopecia areata from someone who has already suffering from alopecia areata. Another thing, that is tinea capitis, which is always confusing with alopecia areata. Again, we are going to discuss कैसे differentiate करते हैं. Alopecia areata is the autoimmune condition like rheumatic arthritis. It is autoimmune condition. So when we are talking about autoimmune condition, there are limitations of allopathic science. They can control autoimmune disease, they can cure autoimmune disease. As well as we are not able to cure autoimmune disease, but we have good remedy that works in autoimmune conditions. Alopecia areata can affect men, women, children. If we are talking about alopecia areata in children, that is more dangerous. When child is suffering from any autoimmune disease, that is more tricky to treat, and उसका spread भी बहुत जल्दी होता है. Any autoimmune disease like alopecia areata, many people will get just 1 or 2 patches, but for some the hair loss can be extensive. Unfortunately, in children who develop alopecia areata before puberty, when they suffer from alopecia areata, are mostly like to develop more extensive and persistent hair loss. Alopecia areata कैसा दिखता है? That is a simple round patch जिसके अंदर hair roots नहीं होते हैं. Still, that is reversible. Or why, that we are going to discuss. Entire scalp, there are many types of alopecia areata from its location, from its appearance. So when it is a single patch, that is called as alopecia areata. When the whole scalp is affected, that is called as alopecia totalis. If it affects all over the body, मतलब eyebrows भी नहीं है, eyelashes भी नहीं है, beard भी नहीं है, genital hairs भी नहीं है, that is called as alopecia universalis. And if the patch is only at the beard area, that is called as alopecia bari. These are the different terms from the location of alopecia areata. Am I audible, guys? To the online people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And slide is visible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Now, how to differentiate alopecia areata and how to diagnose alopecia areata at clinic? जो suddenly appear होता है. Patient बोलेगा कि 5 दिन पहले मेरी मदर ने बालों में तेल डाला है. That time she felt that कि ये पैच दिखा. वो लंबे टाइम से भी हो सकता है, but that was not increasing, तो उनको observe ही नहीं. लेकिन that is seen suddenly. There is no redness on the patch. जो scalp का portion होता है, वहां पे redness नहीं होती. Redness and scaling is prominent in tinea infection. That is the differentiating point between tinea capitis or alopecia areata. That is painless. When you touch on the part, when you put the finger on the part, that is painless. Patient को pain नहीं होगा. Although that is inflammatory thing, like another autoimmune disease, RA के अंदर redness होगी, RA के अंदर swelling होगी, इसमें swelling और redness नहीं. That is the peculiarity of alopecia areata autoimmune disease. There is no sensation when you
press on the part, normal feeling होगी, excessive pain जैसा feel नहीं है. And the patchy static part, वहाँ पे से suddenly बाल कम हो जाता है. Sudden developing in matter of few days, it may happen anywhere on the scalp. Scalp में कहीं भी हो सकता है. The patch is usually smooth hard skin with nothing obvious to see beyond the absence of hair. आपको कुछ नहीं दिखेगा except no hair. बाल नहीं होंगे, बाकी scalp is completely normal. When you examine the patient of alopecia areata and when you see a red small dot, those dots might be the local application of steroids. That is the only treatment of alopecia areata in allopathy part. They are giving Onacortil locally. For those patients, we have medicine that is medicine. Clear puncture wound. That is needle puncture wound. Remedy is Ledampal. Ledampal. Yeah, the remedy is Ledampal. Yes. When you examine the patient and you see the red chote dot, you can think of Ledampal and you can impress the patient. Yeah, you are taking already some medicine. You will get to know from the appearance. आपको पता चल जाएगा patient already treatment ले चुका है. Why it is reversible? Himanshi, for you. Unlike other autoimmune diseases, the target of inflammatory response in alopecia areata, the hair follicle, and are not completely destroyed. वो destroyed नहीं होते, they are inflamed. उसके ऊपर सूजन होती है, and that is why they can regrow. Inflammation जैसे ही subside होता है, they just regrow again. वो वापस regrow हो सकता है. There is no redness on scalp like RA, rheumatic arthritis. This is very much important to explain the patient. इसमें destruction like other autoimmune disease नहीं होता है. RA के अंदर joint के अंदर destruction हो जाता है, which is not reversible. Deformity create हो जाती है, which is not reversible. लेकिन in alopecia areata, even in psoriasis, that is reversible. That is the inflammatory condition, not destruction. Inflammation is a psora or that is psychotic, not syphilitic thing. So we can regrow the hair in alopecia areata. People with just 1 or 2 patches of alopecia areata often have a full or spontaneous recovery within 2 to 3 months. इसमें लिखा है 2 to 3 years. That is due to theoretical part. लेकिन clinically we have seen कि 3 या 4 महीने में patient को recover अपने आप हो जाता है. If patient is on medication or without medication. If recurrence is there, there is required to treat. When you are आप इतना बड़ा staff लेके बैठे हो, आप इतनी बड़ी office लेके बैठे हो, तो you can treat such patient with medication. However, about 30% of individuals find the condition persist, and because more expensive, they have repeated cycle of hair loss and regrowth. वो बारी-बारी होता रहता है. Hair growth होता है, hair loss होता है. Myth about alopecia areata जो stress की वजह से होता है, that is not the stress-induced disease, लेकिन stress is one of the triggering factor of autoimmune disease. तो stress की वजह से होता नहीं है, stress की वजह से वो trigger होता है. Stress is one of the triggering factor, not the causative factor. And with me, both are different things. Alopecia areata is much more complicated. Extreme stress might trigger alopecia areata in some people. But recent research will show that genes can also be involved. So that is the genetical disease. Treatment of alopecia areata. There are range of treatment of alopecia areata, but none are effective for everyone, and some people with alopecia areata don't respond to any treatment except homeopathy. Corticosteroid, as I told you, Onacortil they are giving locally applied on bald patches, not
even respond well in some cases. More potent approach is to inject corticosteroid solution into the bald patches. As I told you, impress your patient when you see the patches, red dots, you can say कि I'm giving you medication, the red dots चले जाएंगे, that is your injection only, and you can say कि you are already on treatment. In extensive cases, they are using oral steroids, oral corticosteroids. Practical answer is weak. If completely loss of hair, हमारे पास 2 patient आते हैं, they are wearing wig, they are suffering since very long, 20 years, 25 years. They are not taking our medication for alopecia, but wig is the solution. Wig pehn sakte, cause it is very much effective. This kind of alopecia areata is affecting socially as well as economically to the patient. Socially, that is harassing when it is for student or they are suffering kids, so that is very embarrassing for them. They are not, they look different from the other students or other kids. So their survival is difficult in those cases. Embarrassment feeling, कौन सी medicine देंगे? सबको पता है. That is the alopecia areata, guys. Alopecia areata is, I'm going to share you some cases. कौन सी medicine है नहीं, to show you the confidence कि homeopathy can treat such kind of alopecia areata. I will show you later. This is the alopecia areata. Any query, any question for alopecia areata? Physical appearance is the difficult part for alopecia areata patient. एक दो छोटे छोटे पैच है that doesn't affect, लेकिन when it is on the whole scalp, that affects the patient a lot. As a female, hair is very much important part. When they lose it, that affects. Now, as we discussed, एक cycle हमने discuss की थी, and I asked you कि cancer में बाल क्यों जाते हैं. We discussed that is telogen effluvium. Now this is anagen effluvium. Telogen effluvium में क्या होता था? Hair are going to the telogen phase and they recess or they just shade off. वो telogen phase के अंदर shade होता है. लेकिन in anagen effluvium they are falling in anagen phase only. वो catagen या telogen phase में जाते ही नहीं. That is why in chemotherapy we can see कि एक महीने में पूरा scalp clear. That is called as anagen effluvium. And what is the line of treatment of chemotherapy? What is cancer? Cancer में क्या होता है? Basically, that is overgrowth. Yes, cells are dividing rapidly. That is called as simply language में cancer. So they are giving chemotherapy to reducing that dividation of cells. And when they are prescribing remedies such chemotherapies, और उसकी वजह से बालों का भी growth कम हो जाता है. As we discussed कि hair follicles are most or they are very fast growing cell. So like cancer, उसका भी growth कम हो जाता है due to the chemotherapy. That is also reversible. जब भी chemotherapy चली जाएगी, patient get their hair again. So no need to treat anagen effluvium. According to one theory, when you use a local cold application, that helps the patient to reduce the hair falling in anagen effluvium. Again, that is also a controversy because वो local cold application जो somehow कहीं cancer cell के ऊपर भी affect हुआ, so that can be affect the cancer also. So if that is on local part, only on scalp and patient having cancer on local part, you can ask the patient कि you can apply cold application. That helps. This is the thing. बाल anagen phase में ही छूट रहे हैं. That is not going to catagen or telogen phase. वो root से अलग नहीं हुए. Still they are facing breaking of hair. Fragile breaking point that is called as. बाल बीच में से टूट रहे हैं.
in anagen effluvium. लोकल एप्लीकेशन आप आइस एप्लीकेशन बता रहे हो मतलब उसमें तो वो उसको स्लो करता है जो Slow करता है। एनाजन इफ्यूजन स्लो करता है मतलब कीमोथेरेपी का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है उसको नहीं, वो टेम्पररी हेयर के जो एनाजन फेस के अंदर गिर रहे उस वो प्रोसीजर को कम करता है, लेकिन वो कोल्ड एप्लीकेशन कैंसर के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। सारी कीमोथेरेपी ऐसी होती है जिसमें 3-4 इंटेक्ट थेरेपी के बाद में एसी वगैरह चलाने को मना किया जाता है। कोल्ड एप्लीकेशन वो डिवाइडेशन को कम करता है। That is one theory कि you can apply cold application. That is not scientifically proved कि वो help करेगा ही। नहीं कोल्ड एप्लीकेशन होगा तो जो सेल डिवीजन है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता ही है कम हाँ तो यहाँ तो इंक्रीज कर रहे हैं ना कम हो रहा है, डिवाइडेशन कम नहीं हो रहा। अच्छा That is constantly dividing cell as we discussed. वो constant divide हो रहा है, बराबर। That is the normal physiology. और कैंसर में भी ऐसा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हाँ सिंपल थिंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग कोल्ड एप्लीकेशन तो वो डिवाइड होना कम yes. डिवाइड होना कम होगा, दैट रिमेन्स इन एनाजन फेज ओनली। हाँ, लंबे टाइम तक एनाजन फेज में रहेगा, तो एनाजन फेज में लंबा रहेगा, वो कांस्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा, तो दैट होल्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बार नहीं गिरे, बार नहीं गिरे, गिरने तो वाले ही है, लेकिन लोकल एप्लीकेशन कैन प्रिवेंट। This is the anagen effluvium. Patient photo I will show you later. Alopecia areata. The rubric is head, hair falling, spots in bracket alopecia areata mentioned in the dark. The single 3-mark remedy is acid chloride. Believe me guys, acid chloride works excellently when you don't get any constitutional remedy. We are giving in 1M potency every week. 2 या 3 पैचेस वाले पेशेंट को तो within 3 months एकदम क्लियर हो जाए। No need to give any other medicine. This is the specific medicine for alopecia. The remedies are there. So, practical thing is that when patient is suffering from androgenic alopecia, उसको साथ-साथ telogen effluvium भी हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। This is the theoretical part कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ही है और टेलोजन इफ्लुवियम है, लेकिन पेशेंट आपके पास आएगा उसको विटामिन डेफिशिएंसी भी है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी है। पेशेंट को एलोपेशिया एरिएटा भी हो रहा है और उसके साथ शेडिंग भी है। फास्फोरस हेल्प्स इन दोस पेशेंट्स। टेलोजन इफ्लुवियम अलोंग विद एलोपेशिया एरिएटा, लेट्रम्यूल, फास्फोरस, सोराइनम, दैट वर्क्स। इवन ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम and tuberculinum, 2 remedies are there that we are using in tinea infection frequently. Even guys, I am using tellurium for alopecia areata. What is the indication of tellurium? निकाल tellurium boring. Anything round, oval shape के जितने भी patches है on skin, you can think of tellurium. So we are also using that round patch वाले में, especially in alopecia area, and it works. है सब लिखा है स्क्रीन, round or ring shape lesion. हाँ, any lesion that is ring or round or oval, we can think of tellurium. It can be spread now. Alopecia areata. हाँ, during treatment it can be spread. I'm going to share one case of mine जिसमें patient came to me, उसका hair falling already हो रहा था, and during medication वो 3 दिन पहले का ही केस है। they know, हमने वीडियो 3 दिन पहले ही लिया है। I will show you later. मैं समझाता हूँ। Another thing that is head, hair, baldness. जो हमने एंड्रोजेनिक एलोपेशिया डिस्कस किया, उसमें we can think of this one. That is Barataka. Barataka specially affecting on vertex. जब भी vertex के अंदर hair growth कम होता है, तो we can think of this one. Even alopecia capitis totalis, that is पूरे स्काल्प में बाल लेंगे, the single 3-mark remedy is Barataka.
Lycopodium works excellently in male pattern baldness. Even this acid floor, as we discussed. Graphitis with dandruff and skin affection, we can think of graphitis. Cilicia might be there. Yes. Sepia and zinc combined. These are the common remedies that works excellently in alopecia areata. When we get the patch on beard, that is alopecia barbi. We have rubric, that is hair, face, hair, falling of hair, beard. The remedy is capsicum. Believe me guys, we are using capsicum in 200 TDS or 200 OD if required. It works for alopecia barbi. Sorinum we can use as a complementary remedy if the patient is chilly. Chilliness is the key of sorinum. Even tuberculinum we can think in chilly patient. There is controversy in basilinum and tuberculinum. Fancy chilly, fancy hot. We are considered tuberculinum as a chilly patient and basilinum as a hot patient. That works in any round patches, basilinum and tuberculinum. For tinea infection, alopecia areata, you can think of these remedies. When there is hair falling on lateral side of eyebrows, the 3-mark remedy, that is very common, huh? Lateral side of eyebrows. The 3-mark remedy is Suja, Lachesis, and Metallica. Suja is 3-mark remedy. Even mustache can be. Jab bhi hair falling hai, we can think of Betacar, Necromute, Selenium. I didn't get a rubric for eyelashes. Hair falling for eyelashes is there? No. I didn't get anywhere in any repertory. If you get the rubric, just let me know. Eyelashes के बाल गिर रहे हैं. और the dandruff in eyelashes, कौन सी medicine? Selenium. 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 और ये निमिषा कौन सी लगे रही है? निमिषा? हाँ, मतलब dandruff. That is Seneca. So we can think of selenium, we can think of Senicula, and another remedy is Seneca. That is mentioned in Seneca. You have eyelashes? Okay, eyelashes rubric is there. Hair, eye के अंदर है. Eye hair falling eyelashes. Lustox is 3-mark remedy. The single 3-mark remedy. Staphy, sulfur, selenium. The single 3-mark remedy is Lustox. Eyelashes. Ingrowing eyelashes. Okay, good. This is the alopecia areata. Any query, any doubt for alopecia areata? सर eyelashes में रस्टॉक्स कौन सी potency में देनी? I am not using Lustox. I got this rubric first time in front of me. So I'm not using, but you can think of in 200 potency. Sir, it's there in Fatak. Patak material or repertory? Patak repertory or material? Repertory. Okay. Rubric? Eyelashes falling. Yes. Eyelashes falling. 4 remedies are there in Patak. When Yes. Patak is saying it, that is short prescription, guys. Which remedy, sir? Rustox was given, arsenic alb was given, medurinum and petroleum. 4 remedies are given in photography. Eyelashes, dandruff, Senicula, Yes, falling, Senicula, petroleum, long curved phosphoric, steep point toward nose, nitric acid. Okay. Dandruff only 1 remedy is given, Sanicula. Senicula. That is in Fata. So Yeah, Senicula is Fatak. always Yes. there. Fatak repertory. Yeah, Fatak repertory. Senicula is single medicine given. We can think of Seneca also. That is in eyebrows. That is not eyelashes. Sir, in Kent, there are many remedies for hair the falling from eyelashes. Okay, Kent, there are almost 10, 12 remedies. great. And 3-mark is the Rustox in that. Okay.
आइस के अंदर क्रस्ट, हाँ, लीड्स ड्राई एंड क्रस्टी, दैट इज मेंशन्ड इन सेनेगा, और ब्रैकेट में ग्रेफाइटिस लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन बोरिक सेनेगा. You can think of these remedies. Senecula is single medicine given in Phatak repertory, so we are using this remedy. Senecula और कौन सी कंडीशन में यूज होती है? Tinea infection. Tinea on tongue, Tinea capitis. tinea on tongue. We can think of Senecula. Tinea on tongue. Or condition constipation in children. Okay. When you get a constipated child, looks like a calcarea child, you can think of Senecula. Senecula having a typical perspiration like calcarea and silicia, having perspiration on nape of neck. So the remedy is Senecula with constipated child. The symptoms like calcarea ka, perspiration like calcarea ka. कैलकेरिया भी ऑल नो कि वो उसके माइलस्टोन और डिले वो सब भी होता है, तो वी कैन थिंक ऑफ कैलकेरिया फर्स्ट, एंड पेशेंट इज कॉन्स्टिपेटेड, वी कैन थिंक ऑफ सेनेक्युला. कैलकेरिया में भी है, पेशेंट इज नॉट सेनेक्युला इज आल्सो लाइक एंटिएम्प्रोड एंड कैमोमिला, लेकिन कैमोमिला वी कांट प्रिस्क्राइब इन कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड. Constipation is contraindication of chamomile. Even mental calmness is contraindication of chamomile. So child is irritable, we can think of Senecula. Okay, okay, right. So patient is not responding with calcarea, you can think of Senecula. If patient is not responding with calcarea and patient is hot, think of calcarea iode. Calcarea is chilly, iodum is hot. The remedy is calcarea iode. Now infectious agent, that is ringworm, that is not the type of hair falling, but infection causes hair falling. That is what we are discussing over here. Ringworm has nothing to do with worm. That is the main thing. It is actually a fungal infection. Tinea versicularis क्या है guys? Anyone? Versicularis too. white patch, Does discoloration. Discoloration white patches. Yeah, that is related to carodia. That is, people are calling it Parodi. carodia. That Parodia. is Tinea versicularis or pityriasis alba. Two terms are there. Both are almost similar. लेकिन Tinea versicularis is seen all over the body, जिसमें brownish भी हो सकते हैं, whitish भी हो सकते हैं. And more carodia is pityriasis alba. Vitamin deficiency is the cause. Ringworm, pityriasis alba, that is carodia. Tinea versicularis, that is yeast infection, that can be white, that can be brown. That is yeast. You can, that is considered as a fungal. लेकिन आपके पास कोई pharmacist आ रहा है, so you can give your knowledge to him. ये fungal नहीं है, that is yeast infection. More specific. It is called as tinea, but that is yeast infection. Medicines are remain same ही रहेगी, but that is the term. Fungal gets into the hair fibers in affected area, and this hair becomes brittle and break off easily, leaving bald patch. And that is, we see कि जब भी टीनिया वाले पेशेंट आते हैं, टीनिया कपाइटिस, तो उसके अंदर चीज होते हैं, लेकिन नॉट लाइक एलोपेशिया एरिया. उसके अंदर स्केलिंग होता है, उसके अंदर फोतरिया होती है, वो डर्टी लुकिंग पैच होता है, along with alopecia areata जैसा पैच. So the thing is tinea capitis. Itchy होता है, redness होता है, inflammation होता है, scaly patches that might be oozing or blisters होता है,
patches are usually redder around the outer side with the more normal skin tone of the center के अंदर. In every fungal infection, sometimes fungal infection is confused with psoriasis. Psoriasis के पैच जब भी राउंड होते हैं तो we get confused. लेकिन this is the differentiating point कि fungal infection में borders are remain prominent. और in psoriasis पूरा patch prominent होता है, elevated होता है. This is the differentiating point with tinea and psoriasis. This And may create, sorry. sir, is there any differentiating point that in psoriasis we can get a shiny, silvery skin appearance? है ना? Cuprum aceticum is the remedy. Okay. When there is no itching. Without Yes, yes. itching, the single remedy that is Cuprum aceticum. Which remedy, sir? Cuprum aceticum. Okay. Cicuta V is also there, that is eczema without itching. But every time, sir, silvery scales are not there in Without eruption is psoriasis. different remedy, that is dolichos. These are my favorite things, so that is I always discuss with the students. Itching, you can note it down. Itching without eruption. The specific remedy is dolichos. The other remedies, you can think of mesarium, you can think of sorium, you can think of thyroid. That is itching without eruption. When eczema without itching, the remedy is Cicuta V. Psoriasis without itching, that is Cuprum aceticum. And one more thing, that is urticaria without itching. That is Eczema without itching, sir, which medicine? Cicuta V. Cicuta. Urticaria is always present with itching. But when you get the eruption and don't have itching, you can think of Uva ursi. Which remedy? Uva ursi. Uva ursi. That is mentioned in the relationship of Viola T, if I'm not wrong. No, separate medicine. Uva ursi is given separate remedy. That is almas. Almas is given in the relationship of Viola. O या T. Okay, O is orthopedic. That is almas and Viola is two remedy which works on metatarsals and tarsals bone. We have two remedy. One is Viola O, one is Viola T. So O for orthopedic, you can remember like this. Viola O for joint pain, small joint pain affection. So another remedy is almas. That is also specific remedy for small joint pain and wrist pain. Antifungal. Spelling? Sorry. Spelling almas? Sorry. ALMAS. That is almas. Almas? Begins from U. Oh. UL. Yes. I'm very weak in spelling. Gujarati medium student. Treatment of tinea capitis. Antifungal drugs like terbinafine, itraconazole nowadays frequently used. Fluconazole is still outdated, but we can use in 100 or 150. A new drug that is luliconazole that is used as a local application. These are the allopathic medicines. Another term that is seborrheic dermatitis. That is fungal. That is excessive secretion of sebum. There is no cure of seborrheic dermatitis in allopathic science. They can just suppress it. We can treat with sorinum. We can treat it with puja. We can treat it with medorinum. Even Senicula is the specific remedy for dandruff or seborrheic dermatitis. The specific remedy. Excessive scaling due to dandruff. Think of seborrheic dermatitis. Think of Senicula. People are using sulfur, selenium, zinc, tar, salicylic acid, or ketoconazole for seborrheic dermatitis as an anti-dandruff shampoo or anti-dandruff lotion.
Sir, in these cases, can we use arnica shampoos and oils which are there in the market? हाँ, वो मार्केट में वही मिल रहा है तो वही यूज करना पड़ेगा। नहीं, पर उससे रिजल्ट है क्या? वो डैंड्रफ में हेल्प नहीं करता है। आर्निका इज हेल्पिंग फॉर ग्रोइंग द हेयर, वो हेयर ग्रो में हेल्प करता है। और उसमें आते हैं कितने प्रोडक्ट जिसमें जैबोरेंडी, आर्निका और बाकी का सब मिक्सचर रहता है? मिक्सचर होता है लेकिन दैट विल नॉट वर्क इन डैंड्रफ। Okay. पेशेंट इज यूजिंग सम अनदर हेयर ऑयल और शैम्पू, उससे अच्छा है यू कैन स्विच ओवर पेशेंट टू द होम्योपैथिक हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके क्लिनिक पे रखोगे तो यू विल गेट 30% थिंग डिस्काउंट, तो यू कैन अर्न फ्रॉम। तो दिस इज द थियरी कि भाई लोग और कोई शैम्पू हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, उससे अच्छा है आपका यूज करो, होम्योपैथी Okay. यूज करो। दैट इज व्हाई यू कैन गिव टू द पेशेंट। लेकिन आर्निका कैसा कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल। आर्निका प्लांट इज सीन ऑन माउंटेन्स, वो माउंटेन पे मिलता है। तो व्हेन पीपल आर क्लाइंबिंग दे यूज आर्निका लीव्स टू रिड्यूस द पेन, और एक्सीडेंटली व्हेन दे आर यूजिंग externally arnica they get hair growth. That is why arnica is using in homeopathy to grow hair as a mother tincture, as a local application. That is also accidental thing. The accidentally सब एरोडिक sorry, सब एरोडिक डर्मेटाइटिस का केस अगर आए तो अपने किस तरीके से उसको क्लिनिकली एसेस करेंगे कि ये सब एरोडिक डर्मेटाइटिस homeopathy works excellently with Kalisulf 6x. People are using Kalisulf 6x externally as well as internally. Externally Kalisulf 6x की 10 पील ले लो, पानी में डाल दो, गुला दो और माथे में डाल के 3 मिनट रखो। That works. Dandruff कम हो। सर रिपीट करना प्लीज। पानी में डाल के वही पानी से रिपीट कर रहा हूँ। बायोकेमिक 6x में 10 या 15 पिल्स ले लो, एडिट इन टम्बलर के छोटे से पार्ट में पानी में डाल के उसको डाइल्यूट कर दो और अप्लाइड पेस्ट जैसा बना दो, अप्लाइड इट ऑन योर स्काल्प एंड 3 मिनट जितना रखो, इट हेल्प्स, इट वर्क्स एज एन एंटी डैंड्रफ। कालीसल्फ 6x सर आपने यूज किया है, ये सच में रिजल्ट देता है? वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंटली एज अ लोकल एप्लीकेशन KS6x, इट वर्क्स। मतलब डैंड्रफ के लिए जस्ट, बाकी नहीं? डैंड्रफ के लिए that is local application that helps locally for a temporary base, लेकिन that helps patient को help करता है, कीटोकेनाजोल जैसा काम करता है। KS6x is equal to कीटोकेनाजोल। डैंड्रफ जनरली और ओवर स्काल्प में हो क्या વધારે क्या कुछ हुआ है तो you can use all this stuff। એમાં સ્કેલિંગ સર કયા કલર નો હોય સબ એરોડિક ડર્મેટાઇટિસ? Theoretically scaling is yellow. All the discharges of kali are yellow. Yellow dandruff में you can think of Kalisulf. लेकिन in general, even in white dandruff, you can use it in biochemic form locally. Okay. Clear? Okay, thank you. Clear. Homeopathic treatment from alopecia, Kalisulf external as well as internally, bald spot. Even we are using Kalisulf in tinea infection, tinea capitis में it helps. Kalisulf dandruff or scaling or yellow dandruff especially. Mesothelium, you all know it works excellently on scalp, dirty looking appearance with oozing of pus. Pus ooze हो रहा है तो you can think of mesothelium. Scaly eruption, white scabs, white pus आ रहा है scalp में से, think of mesothelium. Medorrhinum, you can think for dandruff as a specific medicine, as a complementary medicine. When you prescribe Kalisulf, when you prescribe Mesothelium, you already use Senegalea and not get response. Think of Medorrhinum as a complementary medicine. Give in 200 or 1 potency as a Sir, complementary. Mesothelium, which potency to use? 200 TDS. As we all know, petroleum, when dandruff or eruption on scalp or dry skin, aggravation in winter. Winter में बढ़ रहा है, think of petroleum. Summer में बढ़ रहा है, think of sarsaparilla. And in whole season, in all the season, you can think of hepatitis. Any skin dryness that aggravate in winter, think of petroleum.
Aggravation in summer, think of sarsa. In any season, think of graphite. As we discussed, selenium, hair falling from eyebrows, beard, and genitals. Falling of nail, what's the medicine? One is Ustiligo, another Helleborus. Helleborus is remedy. Hair a nail fall हो रहा है पेशेंट. Thuja, white scaly dandruff. You can think of thuja as a complementary remedy. In dandruff, Sir, you still go. yeah, Ustiligo, right? कौन सी रेपर्टरी में है? मुझे नहीं पता. पाठक में है सर. Okay. Any other remedy? उसके साथ में ये भी है हेलेबोरस नाइगर, मतलब बट वो 1 मार्क है, यूस्टिलागो 2 मार्क पे है. Yes. हेयर फॉलिंग और उसके साथ में नेल्स फॉलिंग, मतलब दोनों साथ में हो रहा है. Great. 2 remedies are there. Helleborus. यूस्टिलागो. Yes. Mute. Sanicula, profuse scaling due to dandruff, think of saniculia. Bunch में बाल गिर रहा है, think of phosphorus. Carbovage, weakness, acidity, gas. Along with that, when you get the hair falling, think of carbovage. After any existing disease, think of carbovage. Even China, of vital fluid. Diarrhea हो गया है, उसके बाद hair falling हो रहा है, think of China. Thallium metallicum we discussed. That is alopecia after any acute disease. Thallium metallicum. You can even sometime we have seen alopecia areata occurs after any disease. It is not theoretically mentioned anywhere, but we have seen practically. You can think of thallium metallicum in alopecia areata. Mancinella as we discussed after any acute disease. Natrum mure with the typical picture of natrum mure with desire of salt. That is the key of natrum mure. Legacies, क्या picture होता है legacies का? Legacies. Legacies जब भी आती है तो jealousy mind में आती है. Sorry. जोर से. Aggravation is nice. Aggravation before sleep and aggravation while waking up. That is also next. खांसी आ रही है रात को सोते वक्त और सुबह उठे तभी. King of legacies. और legacies में बोलती रहती. Loquacity, fan is required. Hot flushes. That is legacies. Cannot tolerate anything tight around the nail. Tie legacies पहन ही नहीं सकता. When legacies come to you, उसके 2 बटन खुले ही हो. And ask him, बंद नहीं करते, मुझे पसंद ही नहीं. I can't tolerate such thing. That is legacies. Bleeding legacies. Protruding tongue. Along with sorry. Talking in loquacity. Religiousness is also prominent in legacies. Clairvoyance is also seen. Clairvoyance also seen in dreams. That is also legacies. Suspiciousness is there. Dreams of snake, another remedy. Lichen. Yeah. Another protruding tongue, another remedy is cuprum. While coughing, when patient having protruding tongue, think of cuprum. निकालो बोल. क्या बोरिक में देख. सर प्लीज म्यूट करो, बहुत आवाज आ रहा है. Protrusion and retraction of the tongue like a snake, legacies. म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? Is it mentioned in cuprum?
constant protrusion and retraction of the tongue like a snake. Bracket में लिखें. While coughing, when you get such symptom, even after paracetamol or levocetirizine, बच्चा get dryness on the mouth. उसकी वजह से भी ये protrusion हो सकता है. So you have to differentiate वो paracetamol या levocetirizine की वजह से नहीं है. वो dryness की वजह से बच्चा is constantly doing such. That is very common in pediatric patient. तो उसकी वजह से हो तो मेडिसिन काम नहीं करेगी. If it is natural, medicine will work. Sepia is there. Any hormonal changes that affects, we can think of sepia. Try Sebelseroleta in your clinic, as we discussed, as a local application. You can use our hair oil and shampoo also with 50% discount. Let's discuss the patient. Not discuss. Let me show you the photos of patient. What is that? Is it alopecia areata or tinea capitis? सर आपने वो मेडिसिन बोला ना कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन नहीं मिल रही है तो फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं. Phosphorus. Phosphorus for telogen effluvium. Medorinum and sorinum as a complementary for dandruff. When your medicine is not responding properly. Medorinum and sorinum. Yeah. You can give sorinum after medorinum. You can even think of thuja as a complementary. That is extra growth, excessive secretion, thuja. This is can you see the alopecia. photo of patient? Alopecia areata. Yes. आपको दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है. Project, duplicate. नहीं दिख रहा है सर. Wait. See, this is the alopecia. Can you see, guys, online people? Yes. Yes sir. See, initially I was using a camera रखता था at that time. There is the picture of 2015. So 30/3/2015 और this is 20th/4/2015. कितना time हुआ? Almost 1 month ही बस. See the changes after 1 month. What was given, sir? वो मत पूछना. I am not using single medicine in my practice. I am giving polypharmacy. इसमें तो internal medicine होगी. Which external use पता sir? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है. मुझे याद नहीं होता है इतना. 2015 का केस में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कौन सी मेडिसिन दी. Generally, my prescription for alopecia areata is acid fluorolem single dose, Calisol 660 days and tellurium 30 days. This is how I practice. When I don't get any constitutional remedy, this is the specific prescription. And if it is Which required, external use sir? sorry, So can you repeat, sir? acid fluor 1 ml every week, Calisol 660 days. For how many? आता हुआ how many days पे भी आता हूँ, curiosity, and tellurium 30 days. In any case, patient is not responding in 2 months, change the prescription. In any chronic case, so you can give the medication for 1.5 months or 2 months. If patient is not responding, change the prescription. And sir, which medicine given external use? इसमें कुछ नहीं दिया है. I'm not using much mother tincture and external use. Calisol we are giving in biochemic for dandruff, not for alopecia areata. Okay. Sebelseroleta भी कुछ नहीं दिया. Acid fluor, that is the 3-mark single remedy in alopecia areata we discussed.
This is the change. 28/4/2015. CR is the best option. Constitutional remedy आपको मिल रही है, तो don't think any other specific remedy. First approach is constitutional approach. ये सब तो constitution ना मिले, आपके OPD के अंदर बाहर 10 पेशेंट बैठे हैं, you don't have time to find out the constitutional remedy. Then use this. This is the secondary option. If you are doing GP, ये बारिश का माहौल है, पेशेंट आया एलोपेशिया एरियाटा लेके, बाहर 25 पेशेंट बैठे हैं, how can you give time to that patient for 1 hour? वो नहीं मिल पाएगा. At that time, you can think of these specific medicines. मुझे मेडिसिन मत पूछना, मेरी मेडिसिन कॉमन होगी. I will try to save. मैं बताऊंगा. हो गया भाई. सर जब एलोपेशिया एरियाटा हेरिडिटरी हो और साथ साथ वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है केमिकल एक्सपोजर के कारण, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? केमिकल एक्सपोजर दैट इज मेंटेनिंग कॉज, तो वो तो हमें फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो, रूटीन मशीनरी के साथ काम करना होता है और हेरिडिटी भी है, तो क्या कर सकते हैं सर? हेरिडिटरी में यू कैन थिंक ऑफ सिपिलिनम, लेकिन जब तक मेंटेनिंग कॉज होगा तब तक वो क्योर नहीं होगा, और मेडिसिन विल हेल्प टू द पेशेंट. वो रिड्यूस होगा लेकिन रिकरेंस तो होता जाएगा. तो पेशेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखो कि भाई दिस इज द मेंटेनिंग कॉज, उसकी वजह से वापस हो सकता है, तो हम मेडिसिन डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन वो वापस हो सकता है. डोंट गिव द रॉन्ग होप टू द पेशेंट. गलत होप नहीं देनी, बोल के रखो, तो पेशेंट को माइंडसेट होगा ऐसे में सिफिलिनम यूज करनी चाहिए. सॉरी, ऐसे में सिफिलिनम यूज करनी चाहिए हमको. सिफिलिनम एज अ जेनेटिकल कॉज, कोई भी जेनेटिकल कॉज है, वी कैन थिंक ऑफ सिफिलिनम. People are not using cipilinum, they just get confused, they just had fear to prescribe such remedy. लोगों को fear होता है. Okay. वो fear नहीं रखते. So which potency? 1 m every Which week. potency? 1 m every week. सर इन रिसीडिंग हेयर लाइंस जो हेरिडिटरी होता है उनको भी दे सकते हैं वो? हाँ डेफिनेटली. जेनेटिकल कॉज फादर को है, बच्चे को आया है, हेरिडिटरी है. यस. ओके. This is the case of alopecia universalis. She was बच्चा जिसमें genital hairs नहीं अभी डेवलप हुए हैं. As she was बच्चा, तो we can consider as a universalis or totalis. सर आफ्टर कोविड हेयर फॉलिंग हो तो? Thallium metallicum, China carbovation and mancinella. अभी तो ऐसे पेशेंट नहीं आएंगे ना, कोविड गया 3 साल हो गए. अभी आते हैं सर. अभी भी आते हैं, तो माइट बी सम परसिस्टिंग कॉज. कोविड के बाद शुरू हुआ लेकिन मेंटेनिंग कॉज है, तो ही इतना लंबा हेयर फॉलिंग चल सकता है. सही बात. पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मुझे कोविड के बाद शुरू हुआ है, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट सम कंटिन्यूस कॉज. सासू बहू मोस्ट कॉमन कॉज. सर चिकनगुनिया 3-4 साल पहले हुआ था, वो 3-4 साल तक तकलीफ हेयर फॉलिंग की. वो पेशेंट बोल रहा है कि चिकनगुनिया होने के बाद ही मेरे को शुरू हुआ है और अभी तक की शुरू है. ओके, तो रेमेडी विल रिमेन सेम. मेटालिकम, चाइना कार्बोवेजन, मानसिलिन, वो चेंज नहीं होगी. एनी डिसीज. सर हेयर थिनिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम? ग्रोथ है बट थिनिंग है. सॉरी, ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ लंबे में बढ़ रहा है, लेकिन थिनिंग है, बालों का डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब हेयर फॉलिकल तो अच्छा है ना? हाँ, दैट इज टेलोजन इफ्लूवियम. हेयर पतले हो रहे हैं और डेंसिटी कम हो रही है. बट बढ़ रहे हैं, लेंथ में तो बढ़ रहे हैं. लेंथ बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ सकती है, डेंसिटी कम होगी. तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ऑल द रेमेडीज वी डिस्कस अबाउट टेलोजन इफ्लूवियम, फास्फोरस, एसिड फॉस, पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर से प्रिस्क्राइब करना है, स्पेशली इन टेलोजन इफ्लूवियम. विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो ट्रीट करो, थायराइड है तो वो ट्रीट करो,
हेयर फॉलिकल कैसे समझ में आएगा कि वो मतलब अभी है नहीं है और कैसा है, मतलब उसमें ग्रोथ होगी नहीं होगी? हाउ टू चेक फॉर दैट? When you pull the hair, if you get the hair follicle, white bulb दिखता है या black bulb दिखता है, that is telogen effluvium. आपको एक्सटर्नली पता नहीं चलेगा कि पेशेंट के हेयर कौन से साइकिल के फेज में है, एनाजन के, केटाजन के या टेलोजन के. लेकिन जब हेयर फॉलिंग होता है एंड इट इज विथ रूट्स, तो दैट इज इन टेलोजन फेज, वो टेलोजन के अंदर. So that is in anagen or catagen phase. So that is not telogen effluvium. That might be due to androgenic or any other cause. वो local cause भी हो सकता है, cosmetic treatment भी हो सकता है. Are you getting my point? Yes, sir. This is the case of alopecia totalis from Thailand. From Thailand, international patient. ये मदर ने फर्स्ट सर टाइम फेस को कैसे, अगर हेयर फॉल आपने बोला ना कि बल्ब के साथ निकल रहा है, तो कौन से फेज में है, कैसे पता चलेगा? एनाजेनिक या केटोजेनिक? दैट इज माइक्रो थिंग ना. तो कौन सा वी कैन आइडेंटिफाई क्लिनिकली टेलोजन फेज ओनली. एनाजन और केटाजन नहीं पता चलेगा, लेकिन टेलोजन नहीं है तो दैट इज इन एनाजन और केटाजन फेज. सिंपल. ओके. नहीं, दैट इज नॉट फ्रॉम बर्थ. ये चला गया, हेयर फॉलिंग हुआ. जब जब पेरेंट्स ने हेयर रूट्स ऑब्जर्व किए हैं, they just stand the photos. ये एलर्जी हुई थी, and this is very common when hair roots में से hair बाहर आते हैं. Patient gets allergic irritation kind of things when hair gets out from the roots. So we can think of apis and all the things with redness and itching. We can give this remedy. See, we can see the roots in the scalp. सर दिख नहीं रहा है पिक्चर. दिख रहा है? यस सर, कांट सी. मतलब ब्लर दिख रहा है या यू आर नॉट? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है. नो वी कांट सी. मतलब जो आप स्लाइड बता रहे हो वो तो क्या दिख रहा है स्किन के ऊपर? कुछ भी नहीं. कुछ नहीं दिख रहा. Now is it visible? यस सर. Yes, yes. See, these are the very lengthy procedure. पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी पेशेंस होना चाहिए. 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 लाख भी, 1 ईयर भी लग सकते हैं. सॉरी, 1 लाख तो नहीं, तो पैसे लगेंगे 1 साल में. इतना चार्ज कर सको तो अच्छा है. These are the roots which are getting developing. See, eyebrows के अंदर भी roots आ रहा है. Can you see the roots? छोटे छोटे बाल आ रहे हैं. That is baby hairs. जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो एलोपेशिया एरियाटा, बेबी हेयर आना शुरू होते हैं. See the change. ये पेशेंट ने बना के भेजा था 2 जून 2020, 1 अगस्त 2010. See the change. वाओ, अमेजिंग रिजल्ट सर. वाओ. During the treatment, patient get that boil. We use moxol and belladonna for that. In any chronic cases, series of remedies required guys. मैं ऐसा कभी दावा नहीं करता हूँ कि मैंने एक मेडिसिन नेट्राम्यूर दे दी और पेशेंट को क्योर हो गया. Series of remedies required to get complete cure in chronic cases.
सर ये बिटवीन ट्रीटमेंट बॉयल आ गया तो आपने फिर से रेफर किया या कॉम्प्लीमेंट्री That मेडिसिन? is the specific remedy for boil. Moxol and Bilet. ओके ओके दो रेमेडीज दिन के टाइमिंग क्या है? When you are using higher potency, don't repeat much in chronic cases. So Moxol up you can give every week हर हफ्ते में, और Belladonna तो we are giving higher potency in TDS. That is acute remedy. The acute remedy you can repeat frequently. कर सकते. Posology is a very huge subject and students get confused in posology only. तो उसमें वो जो क्या है यस सर पोसोलॉजी का वो चैप्टर क्या है हम पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी, वो ही गलत है. गलत तो नहीं बोल सकता, वही कंफ्यूजिंग है लाइफ में. और दूसरा वो कैंड ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बाकी सब सही है. सर एक्चुअली सिमिलिमम मिल जाता है लेकिन पोटेंसी में ही गड़बड़ हो जाती है. एक तो एक्चुअली सिमिलिमम भी गलत चीज है. एक्चुअल सिमिलिमम वर्ड ही गलत है. कभी कभी रेपर्टरी वाली मेडिसिन एक्ट नहीं करती, कोई और ही मेडिसिन एक्ट करती है. मैं रेपर्टरी जनरल यूज नहीं करता हूँ, लेकिन व्हेन वी वो टोटालिटी बनाते हैं तो वी गेट ग्रुप ऑफ रेमेडीज. तो वो ग्रुप ऑफ रेमेडीज में से एलिफेंट की पूंछ दिखती है किसी डॉक्टर को, किसी को सूंड दिखती है. दैट डिपेंड्स फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर. हम 4 डॉक्टर एक साथ बैठते हैं तो चारों की रेमेडी अलग हो सकती है. दैट इज द परसेप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, वो क्या देखता है. लेकिन अल्टीमेटली वो 4 मेडिसिन कहीं ना कहीं क्रॉनिक केस से तो आएगी. दिस इज व्हाट वी सी. आप पूंछ से शुरू करो, आप टेल से शुरू करो, आप कान से शुरू करो, जहां से भी शुरू करो, लेकिन वो 4 मेडिसिन एक क्रॉनिक केस इज देयर, वो कहीं ना कहीं आपको प्रिस्क्राइब करनी ही पड़ेगी. व्हेन लेयर्स आर गेटिंग ओवर. ये हेयर फॉलिंग इन बिटवीन हुआ, छोटे छोटे हेयर फॉलिंग शुरू हुआ था इन बिटवीन. देन दे सेंड दिस. So when you are treating alopecia patient, तो in during the treatment patient की हेयर फॉलिंग भी हो सकता है और जा भी सकता है. It might be the COVID time. वो टाइम में कोविड टाइम चल रहा था, if I'm not wrong. 2020 में तो कोविड ही चल रहा था. बस यहाँ तक फॉलोअप मिला था. Then I lost follow-up. 2 चीज हो सकती है, कंप्लीटली ग्रोथ हो गया हो या वापस कम हो गया हो. लेकिन इतना सीधा आईब्रोज के अंदर दोनों तरफ बाल है. टाइम पीरियड लगा सर? सॉरी, कितना टाइम पीरियड लगा था इसमें? ये तो मिनिमम 1 या 2 साल जितना मिला था. बहुत पेशेंस चाहिए. लेट मी शो यू अनदर केस. This is not the after medicine. This is the previous photo of patient. Patient इतने बाल लेके आया था and after medication patient के बाल चले गए. So this is the practical thing I would like to share. कि हर एक केस में ऐसा नहीं होगा कि you will get result कि क्योर हो जाएगा. Patient मेरे पास इतने बाल लेके आया, इतने. She is suffering from alopecia universalis since 12 years. बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं. She is a wife of some MD physician. तो उनको she knows कि ट्रीटमेंट क्या है. All treatment हो चुकी है.
all those Sir, cannot see. from recurrence or Cannot see the slide. now is it visible? Yes. See, इतने बाल लेके पेशेंट आया था, बट इन इनिशियल स्टेज पेशेंट ने ऐसा बोला था कि 3 महीने पहले मुझे बहुत बाल थे एंड विद इन 3 months इतना कम हुआ है. तो शी वॉज इन अ फेज कि उसमें बाल कम हो रहे थे. तो जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे इन दैट फेज, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि आपके पूरे बाल भी ड्यूरिंग मेडिकेशन चले जा सकते हैं. बी रेडी फॉर दैट. हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को तैयार रखो. पेशेंट 2 महीने दवाई लेगा, उसके जितने भी बाल है वो चले जाएंगे, तो पेशेंट वापस नहीं आएगा. इफ यू हैव नॉट येट एक्सप्लेन टू द पेशेंट, तो पेशेंट को बोलो कि ड्यूरिंग मेडिकेशन भी आपके बाल जा सकते हैं. व्हेन दैट फेज गोज आउट, आपके बाल का ग्रोथ शुरू होगा. एंड सी दिस, ये कल या 2 दिन पहले का वीडियो है. ये रीगेनिंग शुरू हुआ. छोटे छोटे बाल वी कैन सी ऑन हर हेयर, ये वापिस आ गए आफ्टर कंप्लीट लॉस ऑफ. सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग. हर एक पेशेंट 2 मेडिसिन 2 पिल्स स्वीट पिल्स देके क्योर नहीं हो जाएगा. हाउ टू मैनेज द पेशेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ टू क्योर द पेशेंट. प्रैक्टिस पे मैनेज कैसे करना है. सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलती है अगर किसी की, तो वो कितने इसमें रिपीट करनी चाहिए फॉर हेयर फॉल? For anything, if you get the constitutional remedy, you can repeat higher potency every week. और बाकी टाइम एसएल पे रखना है फिर? ऐसा नहीं है, वो जैसे आपकी इच्छा हो. You can give specific medicine along with constitutional remedy. You can give mother tincture specific as a constitutional remedy. Okay. If you are practicing like single remedy, so you can keep the patient on SL also. आप SL पे रख सकते हो. See, homeopathy is divided in many ways, many gurus and everything. तो सबसे सीखो, सब में से कुछ लेना है. पेशेंट ऐसा नहीं आएगा कि मैं संकरण वे से ट्रीट होऊंगा, मैं प्रिडिक्टिव वे से ट्रीट होऊंगा, मैं सैगल मेथड से ट्रीट होऊंगा. ऐसे पेशेंट नहीं आएंगे. आपको सर्च करना है कि कौन सी वे से ये मेडिसिन ये पेशेंट को देना है. तो लर्न ईच एंड एवरी वे. संकरण भी आना चाहिए, सैगल भी आना चाहिए. Are you with me, guys? सर एसबीएल का स्कैल्प टोन का मेडिसिन वर्क करता है? स्कैल्प टोन, वो जो लोशन आता दप्पी आती है का वो ना. क्या? आई एम नॉट यूजिंग, लेकिन बैक्सन का एक अभी रिसेंटली लोकल एप्लीकेशन शुरू हुआ है, दैट इज रिवाइवल. ऐसा कुछ ना. हाँ वो अभी रिसेंटली आया है रिवाइवल, वो जो है रिवाइव हेयर. रिसेंटली हुआ है. आई एम गिविंग टू द पेशेंट which is approximately 500 rupees की प्राइस है. So if patient is affording, you can use it. Not in every patient. Practically not yet seen कि उससे रिजल्ट मिला है या नहीं मिलता है. नहीं स्कैल्प टोन तो सर एसबीएल का टैबलेट का फॉर्म है, मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन का टैबलेट है वो, काफी 3-4 इसका. वो मेरे नॉलेज से बाहर है. आई एम नॉट यूजिंग दैट. मैं वो कॉम्बिनेशन जनरली यूज नहीं करता हूँ. मैं स्पेसिफिक मेडिसिन का एक क्लिनिक पे कॉम्बिनेशन देता हूँ. If patient is suffering from cold and cough, तो कोल्ड की भी दो और कफ की भी दो. That's it. अपना ही कॉम्बिनेशन ना दे यार, और लोकल कॉम्बिनेशन यूज करें. सिंपल है ना. एलियम सिर्फ अभी दे दो, और कंजेशन है तो एंटियम टैट भी दे दो. सही है ना गाइस? आर यू विद मी?
Yes, sir. पेशेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए कोई भी पेशेंट को Yes, रिजल्ट sir. मैटर Yes, sir. करता है. Whatever the way you use, that doesn't matter. आपने मदर टिंचर दिया, आपने 4 टाइम लेने को बोला, आपने 50 मिलीसीमल पानी में डाल के बोला, that doesn't matter for patient. पेशेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए. 15 दिन में उसको 1% भी कम हुआ तो वो आपके साथ 1 साल तक आएगा, लेकिन वो 1% रिजल्ट उसको मिलना चाहिए. पेशेंट को सिग्निफिकेंट चेंज आना चाहिए. देन एंड देन पेशेंट कम टू यू अगेन. फॉलो अप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. दिस इज द एलोपेशिया बार्बी. वी आर यूजिंग कैप्सिकम, वी आर यूजिंग एसिड फ्लोर. ऐसा मत पूछना ये पेशेंट में कौन सी दी थी, दैट आई डोंट. No slide, sir. स्लाइड नहीं दिख रहा है. See. ये जो ट्रिकोटेलोमेनिया वाला आपको बताया, शायद वही बच्चा है ट्रिकोटेलो. ये आंखें अलग अलग नहीं रही, राइट लेफ्ट ऐसा नहीं, सेम ही है. होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन हमें वो पेशेंस होनी चाहिए. मेडिसिन विल रिमेन सेम, वो नई नहीं आएगी. कंडीशन विल रिमेन सेम, वो नहीं आएगी. The way we choose the remedy, that matters. One of my favorite case of alopecia totalis. This is my first case of alopecia totalis that I have cured. I am not using word cure many times, but this is, in this case, I can say that is the cure. Very well. Now can you see it? Is it visible, guys? Online people? Yes, sir. No. It is alopecia barbae. नहीं. स्लाइड शेयर नहीं रुको, जरा शेयर कर. B? Is it alopecia Barbie? No, no. यानी Now it सारी is डब्बी हो गया ना Oh, मेरा. okay. See, child was suffering from Down syndrome. Patient was on treatment of thyroid, and he came to us in 2015. सारी यारो. ये 15 का है. कौन सी डेट है? 10/6/2015. हाँ, ये कौन सी डेट है? 6/2015. I still remember the name of this salon. By 2015. पूरे स्काल्प में इतने बड़े पैचेस थे. That was my first case of alopecia totalis. That is cured with so many remedies. लेकिन the main remedy we use, that is iodine. Lean and thin बच्चा, excessive appetite, and hot patients. Iodinum also given as a complementary. See, that is 23/5/2015. और ये क्या है? 4/3/2015. कितना टाइम हुआ? 30/5 और ये 3 महीने हुए ना, 2 महीने, 2.5 महीने, 2.5, 2.5 महीने. See the change. Homeopathy is homeopathy. No other science can treat like such patients.
व्हाट इज इट? ये तो सच में अलग निकला। हाँ, विच कंडीशन इज दिस? ये बच्चा हिल रहा था इसलिए फोटो क्लियर नहीं आया। यस, दैट इज क्रैडल कैप। कौन सी मेडिसिन है क्रैडल कैप के लिए? Misery is mentioned on that folder. हम ओके ना मैडम? Again, another remedy, Ethusa, I don't know. मैं चार्जिंग नहीं किया। Vinca minor, that is चिपक जाते हैं। Viola T is the remedy. Sir, what is the It diagnosis? is cradle cap. जो मतलब लाइन में ऐसे बाल दिख रहे हैं वो क्या? नहीं, लाइन में नहीं, वो जो येलो इरप्शन दिख रहे हैं ना, बाल चिपक जा रहे हैं। बच्चे जब क्रेडल में सो जाते हैं गुड़िया के अंदर, और उसकी वजह से इरप्शंस कैन अपीयर इन 1 or 2 years of age. That is called as cradle cap. The remedy is mesarium, and another remedy is that is viola T. We can think of viola T in childhood eczema. Open boric, childhood eczema, that can be atopic dermatitis, which occurs in childhood. It begins in childhood. Childhood eczema, that is viola T. Randomly use this remedy. The first line of viola T is principal use of this remedy for the eczema of childhood and nocturnal emission accompanied by very vivid dreams. We can think of this remedy, that is viola T. It is also one of Sir, in boric it is mentioned. yeah, boric. Boric first line. Repertory. नहीं, boric first line book, मतलब material. Viola T में. Viola T. मेरे पास मेल पैटर्न बैलेंस के फोटो नहीं हो, as there is not significant change, so that is not curable. लेकिन उनके जितने बाल कम हो रहा है उनके अंदर we can treat. So drastically change seen in these alopecia cases. See, hair growth. Initially, I was not a good photographer. अभी मैं बिफोर आफ्टर के अच्छे फोटो ले लेता। सर इसको कौन सा रेमेडी दिया था? याद नहीं है बहना, नॉट रिमेम्बर। ओके, मुझे आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद नहीं हो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। This is also alopecia barbi. એનું ઢક્કણ ઉડી લે બેટા, મળતું નથી. Capsicum you can use in such patients. Capsicum 200 TDS along with acetylcholine. हाँ, जब भी एलोपेशिया वाले पेशेंट के अंदर हेयर ग्रोथ होना शुरू होगा तो इनिशियली यू कैन सी द व्हाइट हेयर. I don't know what is the reason behind that. I have tried to find out, but I didn't get any proper reason. But that is the practical thing we seen. लेकिन ये व्हाइट हेयर जब गिर जाते हैं उसके बाद जो नया हेयर आएगा that may be black. That depends on age. अभी 60 साल के एज में पेशेंट आएगा तो that will remain white. लेकिन 20 एज में आ रहा है तो that can be converted into black. तो पेशेंट को बोलो कि व्हाइट बाल से मत घबराओ, बाल आ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. व्हाइट और ब्लैक व्हाटएवर. सी, इनको व्हाइट आ रहे हैं और यहाँ पे बाल नहीं थे. सर एनी स्पेसिफिक रेमेडी फॉर बियर्ड ग्रोथ? बियर्ड इन जनरल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए देयर इज नो मेडिसिन. हाँ मतलब आ ही नहीं रहा है. मुझे 18 साल की से ये बियर्ड आना शुरू हुआ है और देयर इज पैच, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं.
लेकिन इफ इट इज एलोपेशिया एरियाटा तो उसके लिए वी कैन गिव कैप्सिकम। नहीं, ग्रोथ ही नहीं है उसको, बियर्ड ऑयल यूज करो, मार्केट में बहुत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे। देयर इज नो मेडिसिन, नॉट एट ऑल, कोई मेडिसिन। ओके, यू कैन ट्राई मल्टीपल, किसी कोई ट्राई करने से कुछ हो जाए, लेकिन एज पर माय नॉलेज नो मेडिसिन विल हेल्प। एनी डाउट कॉस्टिकम 1M में देनी है ये एलोपेसिया बार्बी में, कॉस्टिकम 1M देनी है? कॉस्टिकम नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्सिकम। कैप्सिकम अच्छा 200 कैप्सिकम, TDS, yeah, the single कैप्सिकम 3 mark remedy in alopecia barbi, सिंगल रेमेडी 3 mark single। 3 मार्क। और मत लो यार एक फिर बोलोगे आपने तो बोला था कि एक ही मेडिसिन, एक ही नहीं, सिंगल 3 mark मेडिसिन। ग्रे हेयर के लिए कुछ बता सकते हो कैसा? सॉरी, सर Grey ग्रे hair. हेयर इन फीमेल? ग्रे हेयर के लिए वी कैन गिव थायरोडीनम, वी कैन गिव लाइकोपोडियम, वी कैन गिव विनकामाइन, even Vespertinum is also specific. Early hair graying, Thyroidinum 1 every week, specific remedy. Vincaminer 30 TDS. और लाइको? Lycopodium as a constitutional remedy or deep acting remedy, don't much repeat this remedy, 1 every week, or you can think 1 every month or 15 days. सर हर केस में मेंटल लेना जरूरी है? मेंटल्स मिले तो अच्छा है ना, सब पेशेंट कहाँ देते हैं यार, नहीं मिलते हैं, 90% केस में तो मिलता ही नहीं है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन पेरिफेरी एरिया आपको नहीं मिलेंगे मेंटल सिम्टम, यू हैव टू प्रिस्क्राइब ऑन फिजिकल ओनली। इफ यू आर वर्किंग इन सम पॉश एरिया आपको मेंटल्स ही मेंटल्स मिलेंगे, पीपल आर वेरी मच टायर्ड विद द पीपल, बहुत वो मेंटल्स। तो बात सही है। हाँ, तो मैं 2 जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ, एक पॉश एरिया में भी करता हूँ और एक वो पेरिफेरी में भी करता हूँ, तो दोनों टाइप के पेशेंट मिलते हैं, तो जैसे सिम्टम मिले उसके ऊपर से प्रिस्क्राइब करो। Sir, any advice for GP practitioner, like we practice in slum area? So I am writing one book especially for GP right now. We are working on that. So those book will help you how homeopathic practice you can do with GP. Nowadays, 70% homeopath are practicing GP. And after 15 साल या 10 साल की प्रैक्टिस के बाद, see, now this is the era कि people know azithromycin, people know cefixime, people know ciprofloxacin, तो वो लोग लेके ही आते हैं। तो एज अ जीपी प्रैक्टिशनर आपको कुछ स्पेशलिस्ट करना है, तो कुछ अलग करना है। GP practitioner are converting into homeopathy. Completely is practically not possible. They are simultaneously giving homeopathy, and this is the perfect way. When patient came to you for recurrent piles in your GP practice, now this is the time to convert them into homeopathy. जब people are asking me कि homeopathy practice करूँ या GP करूँ, दोनों करूँ. For survival, GP is required, and उनमें से उनकी मारने की. This is the word I generally use. कोई पेशेंट आर कमिंग टू यू, बच्चे को रिकरेंट कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो नाउ दिस इज द चांस, दिस इज द टाइम टू कन्वर्ट इन होम्योपैथी। आपके पास हर एक सीजन में जैसे ही सीजन चेंज हुई कोल्ड एंड कफ हो गया, पेशेंट आ गया, नाउ मोंटेलुकास ले ली, बिलास्टिन ले ली, देयर इज नो रिस्पॉन्स, नाउ इट इज टाइम टू गिव होम्योपैथी। यस सर, बुक कब लॉन्च करोगे आप? मैं 2 साल से लिख रहा हूँ, तो पूरी नहीं हो रही है, प्रैक्टिस में से टाइम नहीं है। ओके सर, काश वो खत्म हो जाए। सर स्किन के ऊपर कोई कोर्स लो ना, स्किन और हेयर के लिए स्पेशली। टेकिंग सेशन ना, वो अभी पीडियाट्रिक कोर्स चल रहा है, उसमें भी वी आर गिविंग द स्किन वाला सेशन। ना आफ्टर पीडियाट्रिक व्हिच कोर्स आर यू टेकिंग? या सर पीडियाट्रिक वाला करना। नहीं, वो खत्म करके स्किन चालू करो सर, अभी तो स्किन चालू कर दे पक्का।
आपका सजेशन पीडियाट्रिक्स बस कभी वैसे ही खत्म होने आया, वो खत्म करके अभी स्किन चालू करो। स्किन पीडियाट्रिक हाँ, दोनों खत्म दोनों ही होने को इम्पोर्टेंट। है, अभी 2 महीने बाकी है। होम्योपैथी में क्योंकि ज्यादा करके एक स्किन पे ही आते हैं। ना डेफिनेटली वो स्किन करेंगे, पक्का करेंगे। any query, any question guys for alopecia? सर वर्किंग वुमन में Wait अगर a minute, online guy, yeah, please. तो આપણે જે મેડિસિન ओके લાઈટ ઓર થાઇરોઇડ ઇન્કમ આવે એ બધી ગ્રેઇંગ ઓફ હેરને અટકાવશે अटकाव से ओछा नहीं करे। जितने भी हेयर ग्रेइंग हो चुके हैं that will be not reversible, ओके लेकिन आगे बढ़ते हुए कंट्रोल करेंगे। कई पेशेंट में भी सी कि हेयर ग्रेइंग भी कम होता है, लेकिन दैट इज नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। पेशेंट को बोलो वी विल गिव आवर बेस्ट एफर्ट, वो कम हो ऐसा भी ट्राई करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए तो अटका देगा, कम नहीं हो। इन यंग एज, इन टीन एज बहुत सारे पेशेंट को हेयर ग्रेइंग भी कम होता है, लेकिन दैट इज इन रेयर केसेस, नॉट इन एवरी केस। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? So young working woman, age is 32 or something, and she is starting just now hair graying, white color hair, which is appear on frontal side of the some few hairs. So can we give some medicine? Yeah, definitely. Thyroidinum, vincaminum, Okay. और वेस्पाडेनम। वेस्पाडेनम 1 m. नहीं, वेस्पाडेनम that is you can think in mother tincture or you can think in lower potency, that is 30 potency. લોકલ Vespadenum. Mother tincture oral 10 drops. Vespadenum, sir. हाँ, Vespa, yes, but I'm not using that remedy, but most of homeopaths are using that remedy and that works, वो help करता है। कई बार what is happening, you just stay with your prescription, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो नया ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। When you get stuck in some case, वहां पे आपका वो साइंटिस्ट वाला दिमाग बाहर निकलता है, तब तक वो स्मूथली जब तक चल रहा है वो चलता रहता है। सर थायरोइडिनम, वेस्पाडेनम और तीसरा कौन सा मेडिसिन बोला आपने? विनकामाइनम, अर्ली हेयर विनकामाइनर कौन सी पोटेंसी में देना है सर? विनकामाइनर 30 और 200 TDS। इवन लाइस, जो जू बोलते हैं, which is not seen nowadays, but people are using Staphysagree mother tincture for lice, locally apply करते हैं। Okay. You can think of carbo anomalies for lice। टिंचर क्या? These specific remedy orally 200 every week। Carbo Okay. anomalies। और सर वो वेस्पाडेनम का स्पेलिंग बताएंगे क्या? प्लीज बोलो ना डॉक्टर, जरा स्पेलिंग। मुझे नहीं मिल रहा है एक्चुअली, इसके लिए पूछ रही हूँ। गुजराती मीडियम हूँ ना मैं, जरा WIES, that begins from W। ओके ओके। WIBES. WIESBADEN। वेस्पाडेनम एक्वा। मिल गई। फ्रॉम कौन सा स्प्रिंग वाटर? ओटावा। ओटावा कहाँ पे है? दैट इज इन कनाडा। वहां पे अभी वो स्ट्रीम है ही नहीं, वो वाटरफॉल ही नहीं है, तो दैट इज द डाउट, दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेयर। सर भर के might be a back potencies, लेकिन वो बैक पोटेंसीज कितने साल चलेगी? वो टाइम पे भर के रखा होगा सर वाटर। we can consider that as a back potency, लेकिन वो कितने साल तक बैक पोटेंसी कितनी चलती है? हाँ वो भी है। I don't know. Any question, any query regarding alopecia, regarding homeopathy? Broad question. हेलो सर। सर कुछ सर आप याद 6 मंथ कोर्स चलाते हो, कब अभी तो तीसरा महीना चालू है ना, 2 महीने हुए ना आपको। इंस्टा में मैं अपलोड करता हूँ।
Are you using Insta? Yes, yes, sir. No, तो अभी poor response करता हूँ. Sometimes it is quite difficult to give answer in social media. I try to give as much as I reply. Dr. Ankur is the authority. Dr. Ankur संभालते everything. You can contact him. You just keep in touch with him. मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ. And और तो भी कोई नहीं है कैसे भी. हाँ बस वही. सर 3 month वाले ग्रुप कोर्स में थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना. डिस्काउंटेड तो है. सर 5,000 रुपीस है सर. तो 5,000 is very less amount. आप Patient तो चाहिए उतने. संडे को रेस्टोरेंट में खाने को जाते हो तो कितना बिल बनता है? 2,000 रुपए. 3 month 2,000 करनी है. एक 1 hour क्या 2 hour सर? देना है. I will give you. सर 3 month वाला कब है सर? अभी तो लास्ट मंथ बाकी है. And then after we will announce कि अभी कौन सा लेना है. Okay. स्किन और सर स्किन ही लेना सर. हाँ स्किन पक्का सर. Okay, guys. पेरेंट्स को कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और हमको मतलब ऐसा प्रिवेंटरी देना होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग दे सकते हैं. मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता. People are giving syphilinum, people are giving anti-syphilitic remedy to prevent. लेकिन this is the thing, diabetes family में है तो बच्चे में आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं. तो अभी से उसका ट्रीटमेंट करने की कहाँ से? हाँ एलोपेशिया है, ल्यूकोडर्मा है, पेरेंट्स में है तो अभी से there is no 100% chance of occurring such thing. तो अभी से करने की कोशिश करें. That is why I am not prescribing this medication. बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमें ल्यूकोडर्मा है, मेरे बच्चे का अभी बर्थ हुआ है, you just start medicine. I just deny it. Ultimately होम्योपैथी है, no side effect है, लेकिन ultimately medicine. No need to give such, no need to introduce medicine without any reason. Resetting, आपको polypharmacy वापरनी पड़ सकती है. Resetting में we can think of Lyco, we can think of Britaca, અને પેલું તો thinning હોય તો આપણે બધી જાતે medicine discuss કરીએ. Lyco અને Brita સારું કામ કરે. Resetting, male pattern. That prevents आगे बढ़ने से बचा सकते. और locally अपना सेबल से रोके. That you can charge extra money for mother teacher. सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना यार. मदर टीचर एक्स्ट्रा चार्ज, बायोकेमिक, पीपल आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फॉर बायोकेमिक. 50 रुपीज 100 रुपीज पीपल आर चार्जिंग. और सूरत में तो ऐसा है कि एवरी टाइम दे आर चार्जिंग फॉर कंसल्टेशन. अहमदाबाद और अदर स्टेट में ऐसा है कि दे आर चार्जिंग फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन, फिर मेडिसिन चार्ज होता है. लेकिन इन सूरत एक अलग स्टेट, वहां पे लोग प्रैक्टिस करते हैं. बिफोर 15 डेज आई गॉट अ, हाँ सूरत में डायमंड का पैसा भी बहुत है और होम्योपैथी भी अजीब तरीके से ट्रीट होता है. बिफोर 15 डेज आई गॉट अ पेशेंट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सूरत. और हाँ वो मदर थी, उसकी चाइल्ड वाज होम्योपैथ, शी वाज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम सम होम्योपैथ. उसका नाम भी मुझे पता है, आई विल नॉट रिवील इट. लेकिन ही प्रिस्क्राइब्ड इन एक्यूट के पेपर के ऊपर इग्नेशिया टैनम लिख दो एंड पुट इट बिलो द पिलो. That kind of practice people are doing in सूरत. मुझे सूरत वालों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा तो मत करो यार. ये तो ज्यादा एडवांस हो जाती फिल्म के नीचे People are going towards science और ये against science जा रहे हैं. सर एक स्टोरी मैं भी People शेयर करना और चाहूँ नहीं सर. मानेंगे. सर एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँ सर, इससे भी Please. फनी है वो. Yeah. उसके पास एक तोता है सर, और वो बहुत सारी मेडिसिन रख देता है. जैसे सारी मेडिसिन रख दी और उस तोते को छोड़ देता है सर. हाँ. तो वो तोता जिस पे पिक करता है सर, वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है हाँ, सर. people are doing. बाप रे. High dose prescription. बड़ौदा में एक डॉक्टर है, he is practicing, पेशेंट को नहीं देखता है, पेशेंट के बाल लेता है, he is treating और तो दिस बाल, वो बाल को ट्रीट करता है और पेशेंट अच्छा हो. 50 पेशेंट की ओपीडी होती है उसकी. हाँ, that is one theory. और उसके ऊपर से people are prescribing for getting result. बहुत डिफरेंट वेज है. लेकिन साइंटिफिकली लगे ऐसे प्रिस्क्राइब करो, वो ब्लैक मैजिक जैसा नहीं. That looks like that.
सर पेशेंट तो वहाँ भी जाते हैं जो झाड़ फूक करते हैं बाबा वहाँ भी जाने वाले हैं। वहाँ भी जाते हैं, फिर क्या मतलब है? पेशेंट को एक होप दिखती है वहां चले जाते, लेकिन दैट मस्ट बी साइंटिफिक। और पैरासीटामोल का भुक्का करके भी नहीं देना, पीपल आर डूइंग सच थिंग आल्सो। वो सैक्लेक की जगह पे फीवर में पैरासीटामोल का भुक्का करके दे देते। आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स। एथिकल प्रैक्टिस करो गाइस, ऐसा मत करो। सामने से दे देगा ना पैरासीटामोल उसको, फिर भूखा हाँ, प्रिस्क्राइब पैरासीटामोल, कोई नहीं उतर रहा है तो पैरासीटामोल लिख के दे दो ना। ऐसा मत बोलो कि होम्योपैथी पे आपको ऐसे दे दो। सर हाँ बोलिए डॉक्टर सिद्धि। हाँ सर, अगर पेशेंट में बेबी हेयर ग्रो हो रहे और वो लेंथ में नहीं बढ़ रहे तो उसके लिए कुछ विनका माइनर, आपने जो भी मेडिसिन minor। दी है उसके बाद बेबी हेयर हो रहे हैं तो यू कैन हाँ। इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ सेम मेडिसिन, यू कैन Okay। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम मेडिसिन एंड यू कैन थिंक ऑफ विनका माइनर। विनका Okay, माइनर thank you, ग्रोथ sir। भी बढ़ाता है। और सर नॉर्मली Thank you। टेम्पल्स पे जो बेबी हेयर होते हैं उसका क्या कर सकते हैं? टेम्पल्स के ऊपर बेबी हेयर मतलब वो छोटे छोटे बाल आते हैं ना साइड में, तो वो बढ़ेंगे ना। नहीं बढ़ते ना सर, वैसे ही एकदम ऐसे गंदे दिखते हैं वो। कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ वो जो बाल खड़े हो जाते हैं वो बोल रहे हो ना, छोटे छोटे हाँ, छोटे-छोटे। खड़े हो जाते हैं, तो दैट इज वेरी कॉमन इश्यूज। तो उसमें विनका माइनर हेल्प करती है, लेकिन नॉट दैट मच एक्सटेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच हेल्प्स, वो हेल्प करती है। नहीं आई एम ओके 30 or 200 सर विनका माइनर वीकली रिपीट करना है या 30 to 100 TDS TDS 200 TDS और रिपीट नहीं करना है? 30 TDS, इससे ज्यादा तो क्या मतलब रिपीट वीकली करोगे यार। 30 TDS 3 टाइम 30 TDS। ओके ओके ठीक है। 30 TDS। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? सर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक लेक्चर लो ना। अरे मैं वीक हूँ उसमें, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है यार। वो ऑर्गेनल पार्ट में मेरा जरा कच्चा है। सर फिर आप बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब करो, तो कैसे प्रिस्क्राइब करूं? डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हाँ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो मुझे स्पेसिफिक रेमेडी बता दो फिर। स्पेसिफिक तो पता ही सब आपको, ये सब स्पेसिफिक रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी प्रिस्क्राइब करना। मुझे भी डिफिकल्ट लगता है। अरे हाँ, तोता लेके। नहीं, मुझे नहीं खरीदना है तोता होता कुछ। नहीं, वेरी ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच इज क्वाइट डिफिकल्ट, स्पेसिफिक इज क्वाइट इजी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम करती है ना, ऐसा काम कुछ नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का हमारा जो माइंडसेट है ना, दैट सिंगल रेमेडी, वही गलत है। व्हेन पेशेंट केम टू यू, यू गेट द ग्रुप ऑफ रेमेडी, तो उसमें से जो हाईएस्ट रैंकिंग आपको मेंटली, व्हेन यू गो थ्रू सम रेमेडीज एंड व्हेन यू इंस्टिंक्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सम रेमेडी, दैट इज द स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन करना नहीं जाना है कि ये मेडिसिन मैंने क्यों दी, ये फॉस्फोरस ये केस में क्यों आ रहा है। नेवर हैव टू एक्सप्लेन एनीवन। When you feel that feeling, when you feel that extreme कि भाई यही मेडिसिन है, that works। क्योंकि आपने बहुत सारी मेडिसिन रीड की हुई है। When you feel that vibes of medicine when taking the case, that is the constitutional remedy। राशि, this is for you। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल में समझा सर। कंफ्यूजन, सॉरी नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल में, क्योंकि समझ में नहीं आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में हमने ऐसा माइंडसेट किया हुआ है कि नेट्राम्यूर है तो नेट्राम्यूर से ही क्योर होगा, ऐसा नहीं है। राइट नाउ यू हैव पिक्चर ऑफ नेट्राम्यूर, आफ्टर 1 month दैट कैन बी कन्वर्टेड टू एसिड फॉस। तो इफ यू फील कि नेट्राम्यूर लगी रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, प्रिस्क्राइब इट, दैट इज नेट्राम्यूर फॉर यू। और अगर पार्शियल से मिनिमम है तो भी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि नेट्राम्यूर भी है, आपको लग रहा है एसिड फॉस भी, आपको लग रहा है ग्रेफाइटिस भी, आपको लग रहा है कैलकेरिया भी, पुट दिस 4 रेमेडीज इन डीडी, लिख दो। नाउ यू जस्ट फोकस कि आपको कौन के ऊपर, किस रेमेडी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। प्रिस्क्राइब नेट्राम्यूर। इन नेक्स्ट 4 विजिट के बाद व्हेन यू फील कि अभी नेट्राम्यूर के सिम्टम कम हो रहे हैं, नाउ दैट ग्रेफाइटिस इज कमिंग आउट,
Now this is the time to prescribe graphite. Present picture मिलना चाहिए. When you prescribe Maxol or Pulsatilla for yellow expectoration, and now that expectoration is converting into white, now this is the time to change Maxol and Pulsatilla. Focus on presenting picture. Natrum एक साल तक मत देते रहो. If patient is responding well, keep continue with medicine. लेकिन नहीं result मिल रहा है, now it is time to change the medicine. Same medicine potency change. Posology, बहुत difficult. That depends on case. अब जब थोड़े patient देखोगे ना, when you get prejudiced in organ or language, कि ये medicine यही potency में काम करेगी, and you are going to prescribe in that potency also. थूजा बहुत लोगों को 230 potency में वाट्स निकालता है, लेकिन in my case मैं जब तक 1 and 10 ना तो मुझे रिजल्ट मिलते हैं नहीं, तो आई एम यूजिंग इन हायर पोटेंसी आल्सो. मैं लोअर पोटेंसी थोड़ा यूज ही नहीं करता, एंड माय फ्रेंड्स आर गेटिंग रिजल्ट विद लोअर पोटेंसी, तो दोनों सही है. मदर टिंचर उतना ही काम करता है, एंड पीपल आर यूजिंग मदर लोकल एप्लीकेशन, उनको तो लोकल एप्लीकेशन से बाहर निकल जाता है, मुझे तो कभी जाते ही नहीं मेरे पेशेंट. तो दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, और उसके ऊपर से ही प्रिस्क्राइब करना. बेसिक रखो कि स्टार्ट विद 30, ग्रेजुअली इंक्रीज टू 200, ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1 and 10. सम मेडिसिन ऐसी है यू हैव टू प्रिस्क्राइब इन हायर पोटेंसी ओनली. पल्सेटिला आ रहा है, ये मेनोरिया लेके आए हैं, गिव इन हायर पोटेंसी सीएम, यू विल गेट द मेंसेस नेक्स्ट डे ओनली. वो दैट इज द रिटर्न इन द वो नेक्स्ट में लिखा हुआ है, गिव द हायर पोटेंसी यू हैव इन योर बॉक्स. So that will come from your experience. कोई डॉक्टर बोलेगा तो वो आपको नहीं जमेगा. But from the speakers you will get some tips. So you just start from that tips and gradually create your own experience. Okay? Okay. Any question, any query? Homeopathy is full of queries. तो वो नहीं खत्म होने वाली है. Difficult है नहीं, difficult बनाओ. With introducing basically सबके खुद के experience, or who are good in narrating the things, so they have created their own path. तो उसकी वजह से ये इतना confusion create हुआ है. बाकी homeopathy is basic. आपको 4 symptom मिले, just match it and prescribe. That's it. बात खत्म. कुछ नहीं ढूंढना है, कुछ और ये कैंट और वो ऑब्जर्वेशन को भूल जाओ तो आपका कंफ्यूजन चला जाएगा. डिलीट कैंट ऑब्जर्वेशन को डिलीट करो और ससेप्टिबिलिटी को डिलीट करो, आपका 90% कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. सिंपल थिंग. इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑन मेंटल पिक्चर, गिव हायर पोटेंसी. इफ यू आर गिविंग ऑन फिजिकल पिक्चर, गिव लोअर. दैट्स इट. कट. चैप्टर क्लोज. और कुछ नहीं. ससेप्टिबिलिटी में पढ़ो ही मत. That create more confusion. Repertoire तो मुझे भी नहीं आता है. Any question, any query? Okay, guys. Thank you, sir. Really amazed to Thank you, sir. session that is almost 3 hours, 2 hours. The 11 yeah, it is 3 hours. 3 hours. Okay. This is also good for me. I am increasing my level. So I'm increasing my potency to speak. That is 4 hours, 1 or 2 o'clock. Almost 4 hours, 3 to 4 hours. Yeah. Okay, see you. See you with same Thank energy. you, sir. Thank you so much. Yeah, yeah. Bye-bye. Bye.